Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और yes, literally all to see आज होगा hopefully और बहुत लोग join करने वाले हैं towards the stream. I know हम 5 मिनट जल्दी शुरू कर दिए, which is kind of surprising for many people. कभी कभी जल्दी होना भी अच्छा आदत है, right? क्या बोलते हो? Like, but anyway, भाई आप देख ही रहे हो वहाँ पर पैनल very very special panel आज first time on Almighty Blues FC, of course, welcoming AKG आशीष भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अंकित सर. और बाकी आई एम रियली एक्साइटेड टू बी द पार्ट ऑफ दिस पैनल. अरे नहीं नहीं, डेफिनेटली आवर प्लेजर एंड ऑफ कोर्स हम बहुत मतलब महीनों क्या है मतलब ऑलमोस्ट ईयर से आई एम बीन फॉलोइंग यू वेरी क्लोजली, लेकिन होपफुली वी विल गेट देयर एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स जो मिलते हैं आपसे इज अ लर्निंग फॉर लॉट ऑफ अस एज वेल, राइट? सो थैंक डेफिनेटली यू अंकित सर. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. And of course, like talking about Barca and talking about ultras, मतलब we had to get on सादिक भाई. सादिक भाई जो I know मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच के लिए काफी एक्साइटेड है आज रात को, because people might watch it later, but हाँ, when we are actually doing the stream, it is actually happening tonight, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं. But सादिक भाई, over to Barca. So which is your first love, Barca or Man United? I always say United is my love and Barca is my best friend. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग. बट अगेन बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी प्लीज स्मैश दैट लाइक बटन. और यार नो सीक्रेट्स देयर. आई नो एकेजी मोस्ट ऑफ देम शुड हैव सब्सक्राइब, नहीं किया तो यार आप बहुत सारा मिस कर रहे हो. प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू एकेजी. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग फॉर श्योर. बने रहना क्योंकि हाँ, वी विल बी डिस्कसिंग मेनली यूरोपा लीग आज, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द चैंपियंस लीग. बट या टॉकिंग अबाउट चैंपियंस लीग, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा. ऑब्वियसली चेल्सी वन लास्ट नाइट. मैंने रिव्यू किया था डिटेल में, लेकिन बिग शाउट आउट टू ड्रॉग बाबा, दैट इज बाबा आर ब्रदर, क्योंकि यस ही एक्चुअली पॉइंटेड आउट वन थिंग कि कल इन द मैच देयर वाजंट वन पर्सन दैट वाज, आई थिंक टिमोथी विया स्टार्ट नहीं कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट. तो टिमोथी विया बेसिकली वेयर नंबर 22 on his jersey. It was 22nd February 2022 and it was his 22nd birthday. So maybe वो एक lucky charm था for Chelsea, I don't know. Or talking about Baba, Baba is here, bigger Baba certainly. Yes, of course Sadiq भाई तो यार पूरा मतलब this is peak Sadiq भाई with Man United आज रात को और कल बारसा. It can be the make or break week for Sadiq भाई for sure, right? And of course, I'm pretty sure AKGB, is waiting for it nevertheless. हाँ, Nikhil, thanks for joining. Of course, हम बात करने वाले हैं. हम hopefully ला लीगा की बात भी करेंगे थोड़ा बहुत. सादिक भाई अभी मैंने बोल ही नहीं दिया सादिक भाई को ऑनेस्टली. लेकिन डेफिनेटली आप सुनेंगे यार. कम ऑन, सादिक भाई को ही सुनने के लिए आए डेफिनेटली. एंड ओके, वील कम टू द क्वेश्चंस पीपल. आज का स्ट्रीम में थोड़ा सा क्वेश्चंस इफ यू कैन कीप अराउंड बार्सिलोना, अराउंड यूरोपा लीग, अच्छा रहेगा क्योंकि यार एकेजी हैज कम. वी वुड सर्टेनली वांट हिम टू आंसर दोस क्वेश्चंस. और ऑफ कोर्स सादिक भाई के लिए अगर मैन यूनाइटेड क्वेश्चंस है, वील टेक इट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रीम. आई होप दैट साउंड्स गुड एवरीवन. एंड अगेन thanks a lot for joining. लेकिन obviously we have to start, we have to start with Napoli Barca. बहुत ही बड़ा मैच. मतलब आप बोलोगे यार यूरोपा लीग है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना के लिए दिस इज द रियल चांस ऑफ जेन्युइन ट्रॉफी. तो दैट इज समथिंग दैट आई एम रियली लुकिंग फॉर टू, जस्ट एज ए न्यूट्रल. फर्स्ट लेग जो देखने को मिला बहुत ही अच्छा था. लेकिन नापोली की बात करते हैं पहले. सो एकेजी, आपके हिसाब से क्या नापोली, इज इट अ केस ऑफ उनको सीरिया में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 3 ऑन द ट्रॉट आई थिंक वो ड्रॉज लिए, राइट? तो इन अ सेंस वो वापस बॉटल नहीं कर ले सीरिया में, और उनके आई थिंक बहुत सारे इंजरीज, वी विल डिस्कस इन डिटेल. बट व्हाट डू यू थिंक कि कैन दैट बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर बार्सा? Yes, of course, it's a blessing in disguise for Barcelona. Of course, सीरिया के ऊपर जो है वो उनकी नज़र बनी रहेगी क्योंकि बहुत क्लोज चल रहा है सीरिया. सो एक उस तरफ तो नज़र रहेगी सीरिया के लिए. मोर ओवर नापोली वर्सेस बार्सिलोना, आई वाज इनिशियली मतलब थिंकिंग कि बहुत ही केजी फिक्चर होगा दोनों टीम के बीच में. बट द फर्स्ट लेग वाज सरप्राइजिंगली थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स बार्सिलोना, ऑल दो चांसेस मिस हुए और अनफॉर्चुनेटली इट एंडेड विद अ ड्रॉ. बट for the second leg, I am very optimistic seeing the recent performance of Barcelona as well. Versus Valencia, we scored like 4 goals. So I'm optimistic for this match. Moreover, of course, as we talked about the injuries, of course बहुत सारे injuries हैं नापोली के पास, जिसका थोड़ा सा जो है वो of course फायदा उठाए कि बार्सिलोना की ये नई अटैकिंग लाइनअप जो अभी फायर कर रही है शॉकिंगली.
Yeah, absolutely. हम आएंगे obviously lineup पे towards the latter part of the stream. लेकिन great point by AKG. मतलब वही है कि in terms of injuries and talking about injuries, obviously Dr. Sadiq is in the house. So Sadiq bhai, I think D Lorenzo. मतलब there is basically कुछ controversy last 24 hours में. Napoli actually has gone record. By the way, people who do not know, Cagliari के साथ इनका मैच था, 1-1 हुआ Monday night को, और डी लोरेंजो I think had a bad clash of heads against a Cagliari player. So he was potentially out. लेकिन at the same time I think their backup right back, that is Kevin Malcutt, वो भी I think उनको काफ इंजरी है. तो बहुत लोग बोल रहे हैं उसके लिए भी Napoli has come out and actually made a statement कि he is actually not as bad as what it looked, that is Di Lorenzo, and controversially वो खेल सकते हैं. मतलब I know load of other injuries which I'll come to, but what do you think about these head injuries? Like, is there even a 1% chance कि उन्हें लेना चाहिए chance? Well, this question has two sides to it. One is what the club is coming out with, because officially the club has to come and thank you, Baba. Okay, one. I mean, as I was saying, कि एक तरफ की story ये है कि what the club has come out with, because usually the club has to announce whether they've put the player in concussion protocol or not. If a player goes into concussion protocol, he has to be monitored at home for 48 to 72 hours, depending on the protocol of the league. And knowing that the Italian league did not allow Christian Eriksen to play, so I am pretty sure that the medical protocols, once the club announces, are pretty stringent there. So at least for 48 hours, he would not have been available. So if the club has now come out and said that it's not that serious, that means they have officially said that they have not put him into the concussion protocol. So that needs to be looked into. The second side is if there was a serious injury and the player was groggy, and from the medical point of view, you definitely have to be a whole lot more cognizant about it from the medical side. But again, the final word is with the club and what the club says and what the UEFA officials accept. If they accept Napoli's explanation that he was not in the concussion protocol, then obviously there is a pretty significant chance that he might play. But then again, if a player has had a concussion recently, how effective he might be, we never know. So in a way, Napoli might just be shooting its own foot by playing him. Wow, that's very interesting. मतलब हाँ, वो इसलिए मैं बोला controversial हो सकता है, because it's not just basically one match. It can basically, लाइट गई मेरे ख्याल से. मुझे भी यही लगता है. हाँ, अंकित अंकित भाई बोल भी रहे थे कि लाइट जा सकती है बोल करके. तो आशीष भाई कैरी करें, हाँ, बताएं हाँ ऑफ आपको कोर्स क्या कैरी opinion करते है हैं. match? मेरे को भी ये लगता है कि उनका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो राइट बैक, जो शायद मोस्ट प्रोबेबली हमको नहीं देखने को मिलेगा. बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि बार्सिलोना किसको हैंडल करेगी ऑन द लेफ्ट विंग, किसको डिप्लॉय करेगी ऑन द लेफ्ट विंग, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक पोजीशन है जिसको बार्सिलोना को थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना चाहिए. सो अगर लेफ्ट विंग के बारे में बात कर ले, सो हु डू वी हैव रियली, क्या फरान टोरेस स्टार्ट करेगा या डेम्बेले स्टार्ट करेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रायोरे को तो स्टार्ट करना बनता है, और ट्रायोरे अगर राइट हैंड साइड में रहेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की जो है एक पोजीशन खाली रहेगी. तो सादिक सर आप बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए लेफ्ट विंग बार्सिलोना का? देखो, मुझे तो ये लगता है कि लास्ट मैच में जब अडामा भी खेल रहा था राइट विंग पे तो वो बहुत इफेक्टिव था, लेकिन जब डेम्बेले आया राइट विंग पे तो उसने एक अलग ही हाँ, रंग चार्म रूप दे दी दिखाया. क्या तो. हाँ, और पिछले मैच में भी वलेंसिया के अगेंस्ट भी आई थिंक ओबामेयांग के बाद अगर देखा जाए तो डेम्बेले हमारा सबसे बेस्ट अटैकिंग ऑप्शन लग रहा था. तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त डेम्बेले को राइट विंग से हटाना चाहिए. और फेरान टोरेस भी लास्ट मैच में लेफ्ट विंग पे बहुत इफेक्टिव था, और आई थिंक अगर उसको इस मैच में बिठा देंगे तो उसके कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत बुरा होगा, क्योंकि पिछले मैच में उसने शॉट ही नहीं लिया. तो ये हमारे, क्योंकि हमने उसमें इतना इन्वेस्ट किया है, वो यंग प्लेयर है, फ्यूचर है क्लब का, वन ऑफ द, मतलब वो जो एक जो पूरा भी जो 18, 19, 20, 21 साल का या 18 से 21 साल का जो ग्रुप है जिसको हम अभी ग्रो कर रहे हैं, उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो मुझे लगता है फरहान, ओबा और डेम्बेले के साथ ही स्टार्ट करना चाहिए, और सेकंड हाफ में राइट विंग पे या लेफ्ट विंग पे डिपेंडिंग, क्योंकि फरहान जो है दोनों विंग्स खेल सकता है. हाँ. तो अगर आपको लगता है कि भाई राइट विंग पे उनका ऐसा प्लेयर है कि जिसको आप फिजिकली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो आप वहां पे उसको ला सकते हैं, क्या बोलते हैं, अपना अडामा को ला सकते हैं फिर सेकंड हाफ. हाँ,
ये तो वो बात है, प्रथा मतलब भूली कर ये सकते हैं। फिजिकली एक्सप्लॉइट करने वाली जो एक पॉइंट है, इसके ऊपर जरूर चाबी मेरे ख्याल से ध्यान देंगे। और एक वही है बात, वही है, थोड़ा सा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो हो गया बार्सिलोना के लिए रिगार्डिंग द इंजरीज ऑफ नापोली, क्योंकि नापोली है थ्रेटनिंग टीम है। इफ वी लुक इनटू द रिकॉर्ड ऑफ नापोली इन सीरिया, दे आर लाइक डूइंग वेरी वेल। बट रिसेंटली जो स्टेबिलिटी आई है बार्सिलोना में विद द कमिंग ऑफ चावी, एंड जैसे जैसे टाइम पास हुआ है, आई गेस वी आर, यू नो व्हाट, वी आर इन कंटेंशन ऑफ एटलीस्ट रीचिंग सेमीफाइनल्स ऑफ यूरोपा लीग, अगर ये नापोली वाला परीक्षा पास हो जाता है तो। 100%. Like again, sorry guys, थोड़ा सा है ना इशू है, टेक्निकल इशू, बट होपफुली यू नो एज इन यू गाइस आर हैविंग अ लॉट ऑफ फन जो भी देख रहे हैं। आई होप आई एम ऑडिबल, ठीक है? हाँ 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 अंकित सर, चल रहा है Perfect, सब। perfect. So, वही injuries तो I'm assuming like you guys have already spoken about the injuries here. तो I think Politano, Lozano, Zambo, I think Zambo Anguissa and Insigne भी बाहर है. तो that will इंसिग्निया be a का big अभी deal. 50-50 चल रहा है, मतलब कि 50-50, बाहर right? ही है। हाँ 50-50 आई गेस। अच्छा, लेकिन हाँ वहां तो फिर भी आई थिंक दे हैव मर्टन्स. हैविंग सेड दैट आई थिंक नापोली का टेक्निकली 6 गेम अनबीटन रन है इन ऑल कॉम्पिटिशंस, राइट? लेकिन हाँ 2 ही विन्स है इन 6 गेम्स. सो दैट इज समथिंग दैट आई थिंक स्पेलेटीज टीम नीड्स टू टेक केयर ऑफ. और I don't know, like title chances तो is one thing, लेकिन in terms of head to head भी I think बार्सिलोना के साथ I think 3 गेम्स हुए till date, and तीनों में ही I think दोनों टीम्स ने स्कोर किया है. और बार्सिलोना लास्ट 4 गेम्स में ना क्लीन शीट नहीं रख पाई है. तो आई डोंट नो, लाइक आशीष भाई, आपको नहीं लगता कि कंसिडरिंग दीज टू स्टैट्स दैट आई जस्ट सेड, कि देयर इज अ केस ऑफ बेसिकली बार्सा टू चेंज फॉर्मेशन, क्योंकि फुल बैक्स आई थिंक आप यू कैन आर्ग्यू कि जॉर्डी अल्बा इज नॉट यूज्ड टू बी, और आई थिंक डेस्ट मे बी क्वेश्चन मार्क इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव एबिलिटी. तो व्हाई डोंट बार्सा ट्राई 3 एट द बैक इन दिस गेम? यार 3 एट द बैक बहुत रिस्की हो जाती है बार्सिलोना के लिए मेरे हिसाब से, मतलब आई हैव ऑफन सीन अस कंसीडरिंग मोर गोल्स 3 एट द बैक वाले सिस्टम में। मोर ओवर अगर 3 एट द बैक रखेंगे तो जेरार्ड पीके को स्टार्ट करना पड़ेगा, अराउवो तो है, बट एक और कौन बंदा स्टार्ट करेगा? विल इट बी मिंगेजा? क्या मिंगेजा के ऊपर वो हम फेथ रख सकते हैं यूरोपा लीग में नापोली के अगेंस्ट? ऑल दो ही परफॉर्म्ड रियली वेल अगेंस्ट वेलेंसिया, नो डाउट, बट क्या पता, मतलब वही बात है, थोड़ा सा सेफ साइड अगर खेलना चाहेगा चावी तो बैक फोर सिस्टम ही होगी मेरे हिसाब से। बैक बैक एट द थ्री भी सही है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा सेफ खेलना सही है बार्सिलोना के लिए एट दिस पॉइंट पर्टिकुलरली, अगर वो ट्रॉफी वाली चांस है तो। बाकी ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से अगर फॉर्मेशन के बारे में बात करूं तो मेरे को जितनी स्टेबिलिटी इस 4-3-3 में देखने को मिली है, वो मेरे ख्याल से अब अचानक से बैक एट द थ्री करने के बाद आई डोंट थिंक सो दैट वो स्टेबिलिटी बार्सिलोना कैप्चर कर पाएगी। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, क्योंकि हाँ मतलब बारसा की भी इंजरीज कम नहीं है. हाँ, गुड न्यूज इज द लेजेंड एज इन द सेंटर बैक क्लेमेंट लॉगले, ही इज प्रॉब्ली बैक. वो ट्रेन कर रहे हैं वापस. एंड आई थिंक डिपाई, मतलब मेरा फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट, नो सीक्रेट है, डच फैन हूँ बहुत बड़ा. तो डिपाई इज बैक एट सम पॉइंट. तो दे विल इंट्रोड्यूस, आई विल कम टू बेसिकली इन ईच पोजीशन इन पर्टिकुलर. लेकिन उमटीटी is still out, Fati is still out, and Sergio Roberto obviously जो as a नाम के लिए honestly I think probably time हो गया उनका, to be very honest, right? Yeah, again no disrespect, but लेकिन I think Frankie de Jong नहीं होने से I don't know that Steele जो है midfield में versus Napoli midfield, like वो थोड़ा सा problem है. Frankie de Jong I think came off in the Valencia game हाँ injured, right? So he may not be available either. So that is interesting. लेकिन चलो डिफेंस का आप चेंज नहीं करना चाहोगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एज इन बारसा इन ओवरऑल, राइट, एज इन व्हाट डू यू थिंक जो चेंज हुआ है, राइट, इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म, इट इज डाउन टू जस्ट जावीज मेंटालिटी और इट इज द ट्रांसफर्स? क्या लगता है, मतलब एनीवन इन द पैनल? सादिक सर आप स्टार्ट करो फिर मैं कंटिन्यू देखिए, करूंगा। अभी आप बात कर रहे थे फॉर्मेशन की 4-3-3 की. आई थिंक बारसा का अगर आप पूरा गेम स्टाइल देखो ना, तब से जावी आया है. वो फर्स्ट गेम से जिसमें उसने राइट साइड पे राइट बैक ऑस्कर मिंगेजा को खिला दिया था और जॉर्डी एल्बा था. जावी इज गोइंग बैक टू हिज रूट्स, जो कि था क्रोएशियन सिस्टम, जिसमें आप 4-3-3 स्टार्ट करते थे, लेकिन आपका जो एक फुल बैक होता था वो डिफेंसिवली नीचे रहता था, और दूसरा फुल बैक जो है वो एक विंग पे ही यूज्ड टू क्लाइंब अप, जहां पे आपके पास इन्वर्टेड विंगर खेलता था, जिस विंग पे, जो कि इस वक्त आपका लेफ्ट विंग है. तो जॉर्डी एल्बा वैसे ही डिफेंसिवली थोड़ा सा शेकी है, तो आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जॉर्डी एल्बा डिफेंस में भी लेफ्ट मिडफील्ड तक के पोजीशन तक आता है, पूरा पीछे नहीं आता.
तो उसके साथ कभी कभी ऑक्सिलरी, जो हमने एथलेटिको के गेम में देखा था, एक ऑक्सिलरी सेंटर बैक बन के फ्रैंकी डियोंग खेल रहा था और डैनी एल्वेस जो है वो सेंट्रल मिडफील्ड में चला गया था। तो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ्रैंकी डियोंग इज नॉट देयर, देन वी कैन हैव अ फुल मिडफील्ड क्वार्टेट, क्योंकि वो 4 मिडफील्डर खिलाता है हर मैच में। वो फिर गावी को भले ऊपर खिलाए थोड़ा लेफ्ट विंग पे करके, क्योंकि वो उसका स्टाइल ऐसे बन जाता है, ही मेक्स 3 डायमंड्स इन ट्रांजिशन। एक आपका यहाँ सेंटर बैक, 2 सेंटर बैक्स होते हैं, वो वाइडिश हो जाते हैं थोड़े, जो स्पेस को डिफेंड करते हैं, जिसमें अराहो इज एक्सीलेंट। लेकिन हम जो सफर करते हैं वो हमेशा राइट साइड पे करते हैं, बिकॉज इधर राइट साइड पे हमें या तो सर्जिनियो डेस्को खिलाना पड़ता है, जो ऑफेंसिवली तो अच्छा है लेकिन डिफेंसिव ट्रांजिशन में ही गेट्स कॉट आउट हमेशा। एंड द सेम थिंग हैपेंस विथ, अगर हम कभी डैनी एल्वेस खिलाएं तो भी सेम इशू होता है। इट्स द सेम सिनारियो. So what I was thinking was we can actually put in the 3 center backs, which is Oscar Mingueza was very good in covering the right space against Napoli, and he was, barring 1 or 2 errors, he was very good against Lorenzo Insigne on the right flank. Araujo on the left, and we can play either Pique or Garcia in that middle position, which doesn't need to move much, but play the long balls and play the, the initial pass in the build-up. And then you could have, in the middle, he either plays a diamond of 4, with Busquets sitting in the center of the diamond, and if Busquets is not playing, he turns that diamond into a square with a double pivot and 2 midfielders up top, and then you have your 3 front wale play karte hain. So you could actually go with a back 3 and actually go with technically a back 4. On paper it will be a back 4 because Jordi Alba will play on the left side, but Alba can then bomb up as a left midfielder, like a quasi winger or a quasi midfielder on the left side. Here you can have with either Adama or Dembele, and then you can have Gavi, Pedri, Nico, and Busquets. That 4 ka ek beach mein you could have a combination, and Farhan and Oba, if my numbers are correct over here. Okay. By the way, like, lot of questions coming on. हम definitely लेंगे questions. पहले थोड़ा team news की बात कर लेते हैं, just to kind of build up on what the game is. मैं start कर रहा हूँ questions को, and we'll come back to them for sure. आप disappointment होइए. And yes, Vinayak unfortunately, has not been feeling well in the last couple of hours. So I doubt that Vinayak will be able to make it today. लेकिन यार, as you know, like Vinayak is always, welcome. और definitely आएंगे विनायक, hopefully in one of the next streams for sure, as an health is first. मैंने ही बोला उन्हें कि यार आप रेस्ट करिए, लेकिन yes, like I don't know, Ashesh bhai, as in I know Sadiq bhai made a point about the change in formation, the format, the personnel as such. लेकिन मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि वीकेंड में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 को यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिक बिलबाओ, राइट, बार्सा. तो एथलेटिक बिलबाओ और बार्सा हम जानते हैं, देयर इज अ हिस्ट्री, नॉट जस्ट चाहे 4th पोजीशन पे बार्सा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल. और आई नो मिंगेजा प्रोबब्ली डिड वेरी वेल, लेकिन डैनी एल्वेस क्या अवेलेबल होंगे वीकेंड के लिए? इज हिज अवेलेबिलिटी नाउ देयर? मेरे ख्याल से हाँ, एथलेटिक क्लब वाले मैच के लिए होगा वो. Okay, Yes, so he maybe is. Dani Alves can come for that match, और यहाँ पर Mingueza को you can still play. लेकिन again coming back to that Jordi Alba situation, Jordi Alba फिर से अंकित सर की स्ट्रीम का थोड़ा सा गेम हो रहा है, लेकिन ठीक है. हाँ मेरे ख्याल से जॉर्डी अल्बा के बारे में बात चल रही थी सादिक भाई. जॉर्डी अल्बा, आप अच्छा ठीक है, हाँ, बहुत सारे लोग डिफेंसिव लाइबिलिटी मान लेते हैं जॉर्डी अल्बा को, बट हिज फॉर्म हैज बीन रीसेंट क्वाइट लेटली. हाँ, डिफेंसिव लाइबिलिटी है, समटाइम्स थोड़ा सा ऐसे हो जाता है. व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट जॉर्डी अल्बा, सादिक सर? देखिए, जॉर्डी अल्बा के बारे में अभी तक जितना मैंने उसको जावी के अंडर खेलते हुए देखा है, जावी इज नॉट यूजिंग हिम एज अ डिफेंसिव प्लेयर, प्रॉपर डिफेंसिव. हाँ, वो उसको यूज कर रहा है, वो जो मैंने कहा ना कि आप ट्रांजिशन में 3-4-3 चले जाते हैं और डिफेंस में आप 5-3-2 या 5-2-3 बन जाते हो. हाँ, ऐसी कुछ हो जाता है, मतलब 5 लोग पीछे खड़े रहते हैं. 5 लोग पीछे खड़े रहते हैं. तो वही हो जाता है कि वो डिफेंसिवली ट्रांजिशन, वो ऑफेंसिव ट्रांजिशन में वो जॉर्डी अल्बा को एज ए लेफ्ट मिडफील्डर या लेफ्ट वाइड प्लेयर यूज करता है जावी. अगर आप उसका कोई मैच का भी हीट मैप निकाल के देखो तो ऐसा लगेगा जॉर्डी अल्बा लेफ्ट बैक कम लेफ्ट विंगर ज्यादा नजर आ रहा होता है इन टर्म्स ऑफ हिज हीट मैप. तो वो और उसका और फरहान का बहुत अच्छा मूवमेंट है उस लेफ्ट विंग पे, बिकॉज फरहान जो है वो इनसाइड कट बहुत तरीके से करता है. इस बारसा, ये जो एक ला मासिया लाइक सिस्टम है जो स्पेन में भी लूचो खिलाते हैं, उसमें ये बड़ा उसका मूवमेंट बहुत अच्छा है उस सिस्टम में. तो फरहान उस सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, और वो पेप के अंडर खेल के आया है सिटी.
उधर भी सेम सिस्टम खेलता है, तो मतलब ही इज बेसिकली वो सिस्टम में रचा बसा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इसीलिए ही इज प्लेइंग जॉर्डी अल्बा एज एन ऑफेंसिव प्लेयर, ही इज नॉट इवन यूटिलाइजिंग हिम एज अ डिफेंसिव प्लेयर राइट नाउ। इसीलिए ये तो डिफेंस में बात आप है। कभी कभी उधर फ्रैंकी डियोंग जो है वो थोड़ा सा लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर, लेफ्ट सीडीएम खेलता है रोल। बॉक्स टू बॉक्स एकदम, मतलब जब हाँ, हो डिफेंसिव ड्यूटी तो पीछे घुस जाएगा, लेकिन अटैक मारना होगा तो ज्वाइन करेगा जॉर्डी अल्बा को, ज्वाइन करेगा मुझे फरान टोरेस के साथ। आशीष भाई आपसे ये पूछना था कि आप सर्जिनियो डेस्ट को कहाँ देखते हो, क्योंकि आई फील के राइट साइड पे वो डिफेंसिवली वल्नरेबल है, लेफ्ट हाँ। साइड पे वो ऑफेंसिवली वल्नरेबल है। मैं सजीनो डेस्ट को फ्यूचर में देखता हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव होते हुए। अभी तो मैं, मेरे ख्याल से जितने गेम्स है ना सादिक सर, मेरे ख्याल से सजीनो डेस्ट को देना चाहिए, खिलवाना चाहिए, और ताकि वो इस नए सिस्टम को यूज टू हो पाए, समझ पाए कि क्या चल रहा है। बट एक चीज तो कहनी पड़ेगी, ये जो 2 डैनी एल्वेस गायब हुए हैं 2-3 दिन के लिए, उसमें सजीनो डेस्ट आकर के ऑल दो हाँ है डिफेंसिव वनरेबल, बट स्टिल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो मेरे को नजर आई है सजीनियो डेस्ट के गेम की। अब वो हो सकता है इसलिए हो कि उसको अपने आप को प्रूव करना है चावी को कि आई कैन यू नो व्हाट, क्योंकि रिमर्स चल रहे थे कि भाई मैं जाने वाला हूँ, ट्रांसफर है मतलब मेरे को भगा देंगे, तो हो सकता है उस चीज को प्रूव करना चाह रहा हो। बट ठीक है, अभी के लिए ठीक है। स्टिल अगर मेरे से कोई पूछे तो आई वुड स्टिल पिक डैनी एल्वेज ओवर सजीनियो डेस्ट, बट मेरे ख्याल से गेम टाइम तो अभी सजीनियो डेस्ट को मिलना चाहिए। उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काफी जो है वो काम आएगा। इंटरेस्टिंग। ये देखिए, अब यहाँ निको का बात हो रहा है तो दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई वाज सेइंग कि अगर बाय चांस फ्रैंकी डियोंग, बाय द वे प्रथम ने क्लियर किया फ्रैंकी प्रॉब्ली विल प्ले, लेकिन इन केस फ्रैंकी को नहीं आप रिस्क करते हो, तो आशीष भाई विल यू एक्चुअली गो विद निको, क्योंकि निको ब्रिंग्स दैट सॉलिडिटी कंपेयर्ड टू गावी और पेड्री इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। सो नापोली के साथ 1-1 है अभी। यार नंबर 8 अगर हम बोले निको को, तो वो नंबर 8 वाला रोल हो जाता है बॉक्स टू बॉक्स खेलने वाला, एंड आई डोंट सी निको डूइंग दैट। अगर वो खेलेगा भी तो वो 90 मिनट पूरा नहीं खेल पाएगा, सादिक भाई नोज दैट, उसकी वो नहीं है क्या बोलते हैं उसको, फिटनेस उतनी कि वो 90 मिनट पूरा खेल पाए। तो आई डोंट पर्टिकुलर सी निको एज अ बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर, बट हाँ अगर जगह लेनी हो फ्रैंकी डियोंग के हमारी मिडफील्ड में किसी को, तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स निको ही स्टार्ट करेगा। यही होगी पेदरी, निको एंड गावी इन द मिडफील्ड, अगर फ्रैंकी को नहीं खिलाता है तो। बट मेरे ख्याल से फ्रैंकी विल स्टार्ट दिस मैच, क्योंकि पिछले गेम में तो हाफ टाइम में हटा दिया था फ्रैंकी को मेरे ख्याल से इसी गेम के लिए, तो फ्रैंकी तो स्टार्ट करने वाले हैं मेरे ख्याल से इस गेम में। देयर इज नो स्पेकुलेशन अबाउट दैट। इंटरेस्टिंग। सादिक भाई, आपको क्या लगता है? मेरा ये है मिडफील्ड। कि निको टू मी इज वन ऑफ द इंटीग्रल पीसेस फ्यूचर के लिए, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो बड़ी एक हाइब्रिड पोजीशन है, वो 6/8 पोजीशन है, वो ना प्योर 6 है ना प्योर 8 है। तो इसलिए आई वाज थिंकिंग कि उसको हम उस रोल में यूज कर सकते हैं जो, अगर आप, हम सब ने एथलेटिको मैड्रिड और बारसा वाला मैच देखा था, उसमें जो रोल डैनी अल्वेज ने खेला था, if you guys remember that role, कि या डैनी या अल्वेज was not a right back, he was a right central midfielder बन के वो खेल रहे थे, और करेक्ट। फ्रैंकी जो है वो एक थर्ड सेंटर बैक बन के खेल रहे थे। तो उसमें ये होगा कि we will be able to use all of our best players, मतलब हमारे बेस्ट प्लेयर्स इस वक्त कौन है, फ्रैंकी है, बुस्केट्स स्टिल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन योर टीम रिगार्डलेस आप जो भी बोले उसके बारे में, आपका पेड्री, गावी, निको, ये 5 आपके मिडफील्डर्स हैं। अब इनको आप कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकी के पास भी ट्रेड्स हैं, वो सेंटर बैक लेफ्ट साइड में डिफेंसिव ट्रेड्स उसके पास हैं, निको के राइट साइड पे डिफेंसिव ट्रेड्स हैं। तो ट्रांजिशन में ये हो सकता है कि जिस तरफ से आप बिल्डअप कर रहे हैं वहां पे फिर आप फ्रैंकी को कह दें कि वो थोड़ा नीचे आके और वो पूरे एक बिल्डअप का पूरा एक रोल, एक्स्ट्रा मैन का रोल प्ले करे, वो एग्जैक्टली जैसे मैड्रिड पंडिट्स कह रहे हैं। और जब आप राइट साइड से बिल्ड करें तब निको वो एक्स्ट्रा मैन के रोल में आ जाए और फ्रैंकी जो है वो डिफेंसिवली एक विंग को थोड़ा सा कवर करे, तो उस तरीके से वो शेप में फिट बैठते हैं। बस मेरा वही है ना, जो पॉइंट में आ रहा था, इट्स अबाउट द वीकेंड मैच, राइट? नो, ला लीगा फॉर मी, बारसा को एज मच एज आप चाहोगे कि कब जीते दीज यंगस्टर्स, लेकिन टॉप 4 इज मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है इस सीजन में, लाइक फॉर मी, लाइक इट्स अ ह्यूज काइंड ऑफ इंसेंटिव फॉर बार्सिलोना, स्पेशली जो समर आने वाला है। एंड विल कम टू ट्रांसफर्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, विल कम टू दैट एज वेल। लेकिन कंसिडरिंग दैट अगेन, राइट नो, फॉरवर्ड लाइन जो है आपका, ओबामेयांग हैट्रिक, बाय द वे, कौन सोचा था यार ओबामेयांग विल गेट अ हैट्रिक सो अर्ली। लेकिन हाँ, it is what football gives you, like that's why we love the sport, ठीक है आशीष भाई? Now he's got a hat trick. फरहान टोरेस अगर नापोली फर्स्ट लेग में काफी मिस किए चांसेस, लेकिन
हम सबको पता है, नो सीक्रेट, द बेस्ट पोजीशन ऑफ फरहान टोरेस probably on form in the last year is that false nine position. He's not like a proper winger जो dribble करते हैं and all that. और लॉर्ड ब्रैथवेट, उनको गेम टाइम चाहिए, कहीं ना कहीं उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, डिपाई को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. एथलेटिक बिलबाओ इज वेरी क्रूशियल. तो वुड यू सी दैट डिपाई कैन बी दैट सरप्राइज फैक्टर जो आए इस गेम में, और मे बी एज अ सब एटलीस्ट? यार बहुत ये एक ऐसा वो है पॉइंट जो मेरे ख्याल से बताना मुश्किल होगा कि डिपाई आएंगे कि नहीं आएंगे. डिपेंड्स अपॉन नहीं ट्रेनिंग की, डिपाई कैसा ट्रेन करें, अच्छा ट्रेन किया है कि नहीं किया है. बिकॉज अगर हम हमारे अटैकिंग लाइनअप के बारे में बात करें, ऑप्शन है डेम्बेले है जो अच्छे मैच शार्पनेस में चल रहे हैं. दी परफॉर्मेंस अगेंस्ट वेलेंसिया वाज रियली गुड ऑफ डेम्बेले. सो डिपाई का आना थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है अटैक को अगर हम नहीं जीतते रहे तो. मोर ओवर लुक डी गोट है हमारे पास, तो लुक डी ओ गोट हाँ, अभी तो ओके. मेरे ख्याल से अगर वो मैं को रिप्लेस करेंगे तो लुक डी गोट आएंगे और कोई नहीं आएंगे. अगर लेफ्ट हैंड साइड में बात करूं ट्रायोरे के बदले मे भी शायद डिपाई आते हुए नजर आ जाए. बट उस्मान डेम्बेले है, टोरेस है, अबोमेयांग है, ट्रायोरे भी है. सो आई डोंट सी डिपाई एंटरिंग इन दिस मैच पर्टिकुलरली, क्योंकि वही है, ये तो फाइनल होगा ना. अगर हार गए तो बाहर, अगर जीत गए तो अच्छा. अंदर. मोर ओवर लीग में ऑफ कोर्स अगेंस्ट सम और दी अदर टीम ऑफ कोर्स मेम्फिस डिपाई, मार्टिन ब्रेटवेट, कोई ना कोई तो अपन को देखने को मिलेगा. बट सिंस यहाँ कोई वो तो है नहीं, क्या बोलते हैं उसको अपन, अवे गोल्स वाला रूल अब तो है नहीं. तो ये तो करेक्ट. अब एक तरीके से फाइनल ही है हमारे लिए, जीतना ही है. तो आई डोंट सी डिपाई एंटरिंग दिस मैच और ब्रेटवेट एंटरिंग दिस मैच. या लेकिन आपने बोला डेम्बेले वर्सेस ट्रायोरे, मतलब इट्स ऑलरेडी अ कॉन्टेस्ट. आफ्टर डेम्बेले जो हाँ. परफॉर्मेंस दिया वीकेंड में, ट्रस्ट मी, लाइक अगेन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस लेवल का परफॉर्मेंस रहेगा कंसीडरिंग व्हाट ही इज बीन थ्रू. बट अभी उसने किया ट्रायोरे का, आई थिंक ही गॉट अ कपल ऑफ असिस्ट्स. कंसीडरिंग दैट, अगेन दिस गोस टू पैनल एंड द चैट, डोंट यू थिंक डेम्बेले डिजर्व्स टू स्टार्ट ओवर ट्रायोरे, और यू वुड स्टिल गो विद जो स्टार्टर है ट्रायोरे इन रीसेंट गेम्स? सादिक सर से तो हमारी अभी बात हुई जब आपकी लाइट गुल हुई थी, तो हम लोग इसी अच्छा, बारे अच्छा, में बात सॉरी, कर रहे थे. तो कोई सादिक नहीं. सादिक सर बोल ही रहे थे कि यार डेम्बेले को स्टार्ट करना बनता है क्योंकि डेम्बेले बहुत प्यारा खेला है. बट मैं पर्टिकुलरली ये चाहूंगा कि मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स टोरेस वाज रियली गुड. मैं डेम्बेले को लेफ्ट विंग में देखना चाहूंगा और ट्रायोरे को राइट विंग में देखना चाहूंगा. आई वांट टू सी बार्सिलोना एक्सप्लॉइट दैट राइट बैक वाला पोजीशन जो थोड़ा सा वनरेबल रहेगा नापोली की, सीन्स दैट इंजरी हैज हैपेंड. तो मेरी पर्टिकुलरली ये रहेगा कि या तो ट्रायोरे स्टार्ट करे राइट हैंड साइड में या फिर फरहान टोरेस करे राइट विंग में, क्योंकि राइट विंग में मैंने टोरेस को अच्छा खेलते हुए देखा है पर्टिकुलरली. बाकी डेम्बेले ऑन द लेफ्ट विंग वुड वर्क फाइन फॉर दिस गेम मेरे हिसाब से. सादिक सर, ऑफ टू यू, आप बताएं. आपका पॉइंट मेरे को बहुत पसंद आया था इस वाली बात में. नहीं वो तो था, लेकिन अगर आप जावी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखो जो उसने यूरोपा के बारे में दिया था बिफोर द फर्स्ट लेग, ही वाज वेरी श्योर कि भाई वी हैव टू, वो क्या कहते हैं, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट बट अगेन वी विल डू अ लॉट ऑफ रोटेशन इन दीज टू गेम्स. तो आई फील कि अगर बारसा टेक्स अ डिसेंट लीड लाइक हाउ दे डिड अगेंस्ट वेलेंसिया इन द फर्स्ट लेग, जो कि आइडियली अगर आप फर्स्ट लेग भी देखो नापोली का जो हम खेले थे, वी शुड हैव टेकन एटलीस्ट अ 2 गोल लीड इनटू द हाफ. जिस तरीके से जो शॉट्स आए थे और जो अटेम्प्ट्स आए थे, तो एटलीस्ट एक 2 गोल लीड बनती थी, लेकिन फॉर सम रीजन वी कुड नॉट फिनिश दैट डे. तो अगर हम एक 2 गोल की लीड लेके जा रहे हैं हाफ के अंदर, तो आई थिंक आप हाफ शुरू होते ही 3-4 चेंजेस देखोगे जिसमें आपके जो मेजर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं उनको बिठा दिया जाएगा. लुकिंग इन माई, आई मीन कीपिंग इन माइंड कि आपका एक इंपॉर्टेंट गेम आ रहा है इन द लीग एंड अगेंस्ट अ टीम दैट इज, जो कि हमारी बोगी टीम बन गई है इस सीजन अगर देखा जाए. वो हमें हर मैच में बड़ा तंग करते हैं. लेकिन आई फील जॉर्डी एल्बा तो इफ barring injury or anything he will probably play the full game because he is already suspended for the game against Bilbao. एग्जैक्टली. तो वो बिल्बाओ वाला गेम बहुत टफ होने वाला है. दोनों विलियम ब्रदर्स एक्सप्लॉइट करेंगे विंग्स को और हमारे पास कोई एक इंजर्ड है ना, निको शायद इंजरी से बाहर है आई थिंक. अगर होगा तो बहुत अच्छी होगी. मैं अभी रिसेंटली सुनने में 2-3 आ दिन रहा से था कि फॉलो नहीं निको कर रहा हूँ. विलियम्स आई थिंक इज इंजर्ड, इनाकी इज अवेलेबल. ठीक है, तब अगर निको विलियम्स बाहर है तो फिर ठीक है, क्योंकि इनाकी विलियम्स को तो पिछले सीजन भी देखते आ रहे थे. निको विलियम्स अचानक से आकर के तबाही मचा रहा है यार. नहीं वही है ना हमारा, गो अहेड सादिक भाई, बोलिए. दैट इज द थिंग, क्योंकि निको विलियम्स और इनाकी विलियम्स जब विंग स्विच करते हैं ना, तो हम लोग का जो राइट फ्लैंक है ना वो बहुत वल्नरेबल हो जाता है. ठीक है, हम बोलते हैं जॉर्डी एल्बा लेफ्ट विंग पे होता है,
लेकिन वो लास्ट जो बिल्बाओ का मैच था, आई थिंक उसमें रोनाल्ड अराहो मिसिंग था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो व्हेन अराहो प्लेस तो वो लेफ्ट साइड पे थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, लेकिन राइट विंग टोटली एक्सपोज रह जाता है। ट्रू ट्रू। अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आएंगे क्वेश्चंस पर। उससे पहले एक्चुअली मैं शेयर करना चाहूंगा नापोली का एक्सपेक्टेड 11। तो अगेन इतने सारे चेंजेस नहीं होने चाहिए नापोली के लिए, अनलेस नो इंजरी जो हमने बात की ऑलरेडी, वो फोर्स्ड है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ये रहेगा उनका टीम। मतलब आई डोंट नो, लाइक आशीष भाई, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द बेस्ट वे इन लुकिंग एट दैट फर्स्ट लेग? कहां पर वल्नरेबल लगी नापोली आपके लिए, जहां पर बार्सा विल हैव द अपर हैंड? यार लुकिंग एट दी वेरी फर्स्ट लेग, मेरे ख्याल से डिफेंसिवली दे वर रियली गुड। मतलब ये जो दो डिफेंसिव बंदे थे, कोलाबली था और मानी थे, ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट जीसस को बार बार मैं देख रहा था, ट्रेवरे भाई गेम कर दे रहे थे जीसस का। तो मैं इंटरेस्टिंगली देखना चाहूंगा ये इन दोनों विंग बैक्स, फुल बैक्स के सॉरी, परफॉर्मेंस की नापोली को। अगर हम विंग से जो है वो मदद डाल पाए, क्रॉसेस डाल पाए, तो मेरे ख्याल से कुछ इफेक्टिव हो सकता है। बट अगेन वंस अगेन बात बस वही होगी कि ये जो दो सेंट्रल डिफेंडर्स हैं, पिछले गेम में भी क्रॉसेस डाले थे, कोलाबली बार बार कर दे रहा था, रोक दे रहा था, मानी बार बार रोक दे रहे थे। मिडफील्ड भी तोड़नी पड़ेगी इनकी। तो बेसिकली मेरे हिसाब से विंग से जो कट बैक होता है, मिडफील्ड में गेम जाता है, और फिर जो एक थ्रू बॉल पैदरी निकाल के देते हैं अबोमेयांग वगैरह को, वैसा कुछ देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मिडफील्ड में हमारा चमक देखने को मिलेगा, विंग्स में थोड़ा सा चमक बैठाना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों जो है वो डिफेंडर बहुत ही फिजिकल है, तो क्रॉसेस विल बी नॉट दैट इफेक्टिव। वी नीड टू बी वेरी, मैं ये कह सकता हूँ, प्रिसाइज अपने शॉट्स के साथ, कि वो शॉट्स टू गोल के कन्वर्जन रेट इस गेम में पर्टिकुलरली अच्छे हों, पिछले गेम के जैसा ना अपन को देखने को मिले। यस यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर क्विक में कमेंट करना चाहूंगा। यस, यूसीएल नाइट में यूरोपा की बात कर रहे हो, ये दोगलापन है भाई। भाई हम एक्चुअली गेम के आगे हैं। हम एक्चुअली, इसलिए वो एक लक फैक्टर भी मान लो। चेल्सी का बेसिकली हम 24 घंटा पहले किए थे। चेल्सी आप देख ही रहे हो क्या हुआ रिजल्ट। और यूनाइटेड फैंस के लिए मे बी इट्स लकी एज वेल। आई नो सादिक भाई विल प्रोबब्ली वांट दैट एज वेल। बहुत लोग चैट पर है। हमने डिटेल में स्ट्रीम किया था कल। दैट इज बिकॉज आज पता है लाइक गेम है, तो लॉट ऑफ इंटरनेशनल व्यूअर्स मे बी गेम के लिए जा रहे हो, तो दे मे नॉट बी अवेलेबल एज वेल। तो हम सोचे यार आज ही करते, और बारसा फैंस आर आल्सो वेटिंग, राइट? तो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस चैट। लेकिन आई नो आशीष भाई आपको जाना है, डू यू हैव लाइक अ कपल मोर मिनट्स? हाँ, कपल मोर मिनट्स के लिए मैं अवेलेबल चलो हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं, मेरे पर को चलो सादिक भाई का इनसाइट सुनना है, उसी के बाद मैं जाऊंगा, क्योंकि सादिक भाई ने गजब इनसाइट जो है वो दिए हैं। मैं इनका इनसाइट यस सुन के ही यस यस, जाऊंगा। 100%, 100%। तो सादिक भाई, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूंगा। हमने फॉर्मेशन देख लिया नापोली का, हम बारसा की टीम की बात कर लिए इन टर्म्स ऑफ सेंटर बैक सिचुएशंस। आप फॉर्मेशन चेंज करना चाहोगे? आई एक्चुअली वेंट विद द ट्रेडिशनल फॉर्मेशन, लेकिन हाँ, लाइक यू नो योर स्टफ। हैविंग सेड दैट, वर्स्ट केस में अगर बाय चांस, चाहूंगा नहीं, लेकिन अगर बाय चांस बारसा हार जाती है मैच, तो what are the consequences? क्योंकि हाँ, the fourth position is very very important in the league. लेकिन is there a strong reason for Xavi to change something major in what is going on? Maybe summer में instead of जो youngsters buy कर रहे हैं, और maybe people on loan, एक approach ही change करें and go for big names such as Haaland. No, I don't think so. Because seeing what Javi is doing right now, he's basically building a system at Barca. He's doing what way back in 2004 or 5 was done by Frank Rijkaard. I mean, I was a witness to that time as well. So we got in Ronaldinho, I agree, but people forget that we got a Deco, we got a Samuel Eto'o, we got a Eric Abidal around that time. We paired up Puyol with a Rafa Marquez. So we built that team from the back. So again, as far as I know, I mean, how far I understand Javi's mentality, he's definitely going to persist with the same. And knowing that Barcelona, the fans, even they understand that this season is basically a transitional season for us. Top 4, yes, that is the main fight for us. Secure top 4, secure Champions League football for next season. And after that, build from there in the summer and get in the players that are fitting Javi's system. We may see some weird signing that we initially rate that, okay, this signing is
we don't even know who that guy is. But if Javi feels that this person fits into his system in a particular slot, after a couple of years, we might be very happy. Oh, you saw when we got that player for such a measly amount, and now he's a star in the system. That will happen at Barca. yes, of course. And by the way, बहुत लोग देख रहे हैं. I hope you're loving this conversation. अगर आप को अच्छा लग रहा है, definitely please press that like button. Please press subscribe. Not just to Almighty Blues FC, of course AKG को by chance अगर आपने नहीं किया है, मतलब he's a legend of Indian YouTube. अरे नहीं football यार also. अंकित सर अरे सच में यार, come on, like मेरे लिए तो है यार. Anyway, I don't know about others, लेकिन हाँ AKG I know you have to go. लेकिन before going, मैं एक्चुअली शेयर करना चाहूंगा व्हाट इज बेसिकली अभी यूरोपा लीग में क्या सीन चल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेऑफ. सो लाइक मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई नो लाइक यू माइट बी थिंकिंग कि यार चैंपियंस लीग में हूं एज अ चेल्सी फैन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट. लेकिन आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस लेवल ऑफ क्लोजनेस. लाइक अब देखो डिनामो जाग्रेब बहुत ही मतलब सिचुएशन है वेयर सेविया हैज व्हाट 3-1 लीड. सेविया एक कमेंट है that they are the goats, लेकिन लाइप्जिग वर्सेस सोसिएडाड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. 2-2 है. लाजियो पोर्टो, आई थिंक पोर्टो ने कमबैक किया था. तो व्हाट डू यू थिंक अमंग ऑल दीज फिक्सचर्स जो है कल, प्लस आई थिंक बेटिस को भी आप डेफिनेटली बोलोगे कि दे आर फेवरेट्स अगेंस्ट जेनिथ. डॉर्टमंड हैज टू कम बैक अगेंस्ट रेंजर्स. आई डोंट नो, बहुत सारे फिक्सचर्स है. एनी टीम जो स्टैंड आउट करती है अपार्ट फ्रॉम बार्सा, जो आपको लगता है विल गो वेरी डीप इन द टूर्नामेंट फ्रॉम दीज? यार मेरे को तो पर्टिकुलरली लग रहा है रेंजर्स विल ऑफ कोर्स बी द अंडरडॉग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट. ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट सेविया, वी ऑल नो अबाउट रियल सोसिएडाड, वी ऑल नो अबाउट बेटिस, पोर्टो, लाजियो, अटलांटा इवन. बट रेंजर्स स्कॉटिश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा खेले हैं रिसेंटली. इनकी जो चेंजेस हुई हैं, मैनेजरियल चेंजेस हुए हैं, प्लेयर्स आए हैं गए हैं, दे हैव बीन परफॉर्मिंग रियली वेल स्कॉटिश प्रीमियर लीग में. और वो चीज़ यहाँ अपन को दिख रही है. दे आर गोइंग अहेड एंड डिफीटिंग डॉर्टमुंड. तो अगर डॉर्टमुंड जैसी टीम, ऑफ कोर्स ठीक है, आई नो पर्टिकुलरली डॉर्टमुंड का थोड़ा सा गेम ऊपर नीचे चल रहा है आजकल, बट स्टिल डॉर्टमुंड अच्छा खेलती है बुंडेसलीगा में. मतलब यार अगर आप ऑन पेपर देखोगे तो कहाँ डॉर्टमुंड और कहाँ रेंजर्स, एंड स्टिल दे आर हैविंग अ 4-2 की लीड. आई पर्टिकुलरली सी देम गोइंग वेरी डीप इन द टूर्नामेंट, अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ गेम ना हुआ तो. बाकी ऑफ कोर्स जैसा एक भाई ने कमेंट भी किया था कि सेविया आर द रियल गोट, सेविया इज द रियल गोट ऑफ दिस कंपटीशन. ऑफ कोर्स दे आर. एंड क्या पता हमको सेविया वर्सेस बार्सिलोना बहुत जल्द देखने को मिल जाए वंस अगेन. सो वो उसके ऊपर नजर बनी रहेगी. ऑफ कोर्स उसमें लोपेटेगी है, वी ऑल नो हाउ गुड ही इज. उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं, रैकिटिच है, ओकाम्पोस है, टू नेम सम अच्छे प्लेयर्स हैं. तो ऑफ कोर्स सेविया कैन गो अहेड इन द टूर्नामेंट एज वेल. पोर्तो को भी नहीं कर सकते. मतलब यार वही बात हो गई ना अंकित सर, आपने वही बोला कि आप ऑफ कोर्स यूसीएल को देखते हो, आपको चमक धमक दिखता है. अंडरडॉग्स है यहाँ पे, पता नहीं बार्सिलोना Yes. क्या, बट स्टिल अंडरडॉग्स है यहाँ पे. और ऑफ कोर्स ये बहुत ग्रेवी कुक करने वाले हैं इस कंपटीशन में. यस एब्सोल्युटली. और भाई आप स्पैम मत करो यार, चैट में आएंगे. लाइक आई सेड आई हैव बीन प्रॉमिसिंग में स्टार करते रहो, सब क्वेश्चंस पर आएंगे. आप डू नॉट वरी. और यस, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी इज अ फैन चैनल फॉर ऑल टू सी. एवरीवन इज वेलकम. लेकिन हाँ आशीष भाई, आई नो आपको जाना है. होपफुली हम वापस बात करें. बिल्कुल we'll बिल्कुल. have a free flowing stream next time. और भी टॉपिक निकाल के ढूंढेंगे. we'll probably have a बारसा अल्ट्रास का ऑल टाइम 11 काइंड ऑफ थिंग. वो अच्छा रहेगा, क्या बोलते हो? चलो, बिल्कुल बिल्कुल. anyway, थैंक so यू we'll अंकित continue. सर फॉर हैविंग मी. नहीं, और सादिक भाई आपसे मिल करके काफी अच्छा लगा, आपकी इनसाइट सुन करके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला. सो The सादिक pleasure is सर all थैंक mine. यू. एंड अंकित सर थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस स्ट्रीम. अरे our pleasure definitely, and we'll see you soon, and all the best for the game. पक्का. बाय बाय. विस्काइल बारसा सादिक भाई जीतेंगे. Style Barca. चलो, तो यस आशीष भाई को जाना था, एंड होपफुली जॉइन अस वेरी सून क्विकली. और अगेन जो लोग मिस कर दिए थे अर्लियर पार्ट ऑफ द स्ट्रीम, विनायक की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है आज. तो मैंने ही सजेस्ट किया यार, कम ऑन, लाइक डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड होपफुली he'll be back in one of the streams as well. लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है सादिक भाई. पहले क्वेश्चन ले लेते, क्या बोलते हो? क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, सही है. लोग गाली देंगे मुझे नहीं तो. तो पहला क्वेश्चन ये हाईलाइट ही कर देते हैं. एक सेकेंड. शुड बार्सिलोना प्ले डेस्ट एंड गो विद द बैक फोर और स्टिक विद मिंगेजा फॉर लाइक द फर्स्ट लेग? आई थिंक सादिक भाई ने ऑलरेडी बोल दिया, लेकिन मे बी मिस्ड इट, सो यू कैन मे बी रिपीट दैट फॉर पीपल I वाचिंग. think they will technically तो जो जाएंगे that will be 4 defenders at the back. But as I said, one of the defenders will be going up and one will be tracking back. Now it depends. If you're playing Ousmane Dembele on the right wing, then I would go with Dest, because what happens, Dembele is more of an inverted winger.
And knowing Javi's style, he loves maintaining width on the pitch at all times on both the flanks. So Dest Okay. can somehow maintain that width on the right side. But then what I'm concerned about is who plays in the midfield. Because on the right side, as I mentioned, Dest tracking back on the right side defensively is still not as competent as I would like him to be. Yes, he has improved in the last 2-3 games, but defensively he's still not very good. And having a Jordi Alba and a Serginho Dest on each of the wings, then you will need to play a Frankie de Jong and a Nico in the middle alongside Busquets, who can then track back a little bit and cover for them in space. Then you will either have to sacrifice on a Gavi or a Pedri, one of the two. Yes, yes. I think So it that will depends. be interesting. यहाँ पर actually एक comment है quickly. Torres won't play rested. I don't know. मतलब would you rest him? नापोली के साथ he has a mental thing. आप for the first leg तो आप तो खेलना चाहोगे, right? उसको. Honestly, it could be a double-edged sword, because if he again has a bad game, then you're just tanking his confidence for the entire season. Yeah. Then you're just tanking Correct. his confidence for the entire season, and maybe just to give him a rest and let him come up against Athletic Bilbao, a team that he has played during his Valencia days as well, might be a better option. Yes, yes. I think ये Oba Traore and Dembele. अब वही left side में Dembele can play, but I think probably मुझे लगता है Torres खेलेगा, इसलिए obviously you're seeing that on screen. But again, things might be different. Next question ले लेते हैं जो आया था. Again, we'll come to the questions. आप question करते रहिए. I will come back to it. ये बहुत सारा बार आ गया है. तो Kunde for 70 million or Lisandro Martinez for 35 million for Barca. No, definitely Lisandro Martinez, because no doubt Jules Koundé is a better defender, I mean, overall. But Lisandro Martinez comes from a system which is similar to what Barca plays. And his price is also cheaper, and age bracket, they are similar. And you already have a Koundé level defender on your team, that is Ronald Araujo. Ronald Araujo is also a young guy who's that good, so you need a centre back who complements him. Getting two alpha centre backs at times is also not a very good thing. I mean, as a Chelsea fan, you would be knowing it perfectly well. You had an alpha in John Terry, but you had the perfect partner with him in Ricardo Carvalho. Yes, absolutely. So I think it makes perfect sense as well. और ये यार it kind of answers itself. लेकिन हाँ, रिकी पुई के साथ क्या होगा? वो है भी क्या? मतलब I don't know, where is he now? He's still part of the squad, but then again, the thing is, what happened with Ricky Puig was that he got sandwiched between two great generations of midfielders that Barca, I mean, potentially great, and one great generation behind that. When we had Ivan Rakitic, Xavi, Iniesta, by the time they were channeling out, and suddenly you had an influx of Gavi, Pedri, Nico coming in, who technically, I mean, okay, some might disagree with me that on a pure on-ball technical basis, okay, Ricky Puig might be a little bit better than them, which I even doubt now, because Gavi, Pedri, and Nico are amazing. At the same time, what has happened is that his other traits that are needed in the system are not as good as the aforementioned three. So he's just basically gone down the pecking order. It's as simple as that. But then with Puig, there is another thing. He, I think, belongs to one of the affluent Catalan families. Okay, yes. I He's think like that's an interesting he's part. like royalty or semi-royalty there. So the point is, getting him off the squad is also not easy. Yeah, it's in getting those political. circumstances. Yeah, exactly. It's a little bit of a mixed situation there. Yes, yes, absolutely. यहाँ पर और बहुत सारे questions. Please, people, don't spam. एक बार करिए. I'll make sure that if I have time, I'll certainly highlight it for Sadiq bhai, and of course, or else I'll answer it myself. Now, yeah, then this is more like a fatigue thing about Torres जो हमने बात किया. I think Gavi false nine is interesting. False left wing, or as in that outside forward. Do you like him in that role, or do you like him in midfield, given the choice? Well, actually, I don't mind him in that role, because what Gavi does is when he plays that role, he drifts inside into a sort of. If you have seen my video with the SLP on the Barca system that I did Yeah, a I while did. back, so Gavi basically shifts into that cam role, if you notice, and Jordi Alba takes over the left winger position in that system when they play that system. And then he has the forward in front of him and a right winger either in Adama or Dembele on the right side accordingly. Fair enough. And this one, again, Rajesh bhai, I hope you're happy.
अभी सादिक भाई ये हमने भी बात की थी वॉच अलाउंग के दौरान. आई रिमेम्बर अबाउट बुस्केट्स. दैट इज द मेन इशू. आई थिंक मतलब अगर बारसा के पास इश्यूज तो बहुत है, बोलेंगे सबसे बड़ा इशू है, आई वुड से दिस इज प्रोबेबली द इशू. सादिक भाई, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? Well, it depends how do we want to proceed forward. If you want, as I said, that diamond in the midfield can be turned into a square. Yeah. So if you go to a square, you go to a double pivot. If you go to a double pivot, you can, in a pinch, play a double pivot of Frankie and Nico. But this season it won't be possible because you don't have the center backs or the defensive fullbacks behind them. So Frankie is sometimes needed to cover as an auxiliary center back. But as a long term, as he's asking, if you want me to say one player in world football right now who can cover those traits, is Monaco's Aurelien Tchouameni. यार चौमेनी सबको चाहिए, बाय द वे. लिटरली सबको चाहिए. It's just like, you know, how there was a time when every team wanted a Sergio Busquets. Oh yeah, of course. I hear you. So a player with those traits, actively a player who's playing with those traits is basically ungettable for Barca, because that is Rodri of Manchester City, who plays a similar. Exactly. नहीं, it's a great point as well, because हाँ, that's बहुत ही minority group है, which is something that I think world football is deprived of. I don't know, for some strange reason इतने सारे आ नहीं रहे आजकल, लेकिन हाँ, this one Guardiola एक ऐसा बंदा है जो I think left center back खेल सकता है, left back खेल सकता है. Longley is long term replacement because he's not fitted in. Garcia hasn't fitted in. Do you think? You know, Guardiola is a very good shout, because I think if you go back, you remember our interim coach when Koeman went on, Sergi Barjuan? Yeah, of course. Josko Guardiola reminds me of him. Oh, right. Sergi Barjuan played the left wide centre back, left full back defensive position. Josko Guardiola plays the exact position. Wow. I think that's something that some relation I did not even anticipate. लेकिन हाँ, that's the thing. लेकिन हाँ, मतलब the guy has it in, लेकिन Barca style में fit होता है Guardiola, you think? He fits that because he's a space defender. Okay. Sorry, pardon me. No जो बारसा के स्टाइल में इफ यू नीड दो वो जो वाइड सेंटर बैक और इफ यू नीड दैट डिफेंसिव फुल बैक जो आपको चाहिए ना, दे शुड बी स्पेस डिफेंडर्स. Fair enough. यार रामोस एंड वरान, मतलब ये किसकी बात हो रही है? Maybe just remembering one of the conversations we had. Anyway, तो we'll come to the next question as well. Now let's talk about थोड़ा बहुत transfers. एक तो यार I know it's too early. It's basically we are kind of before the Europa League and hopefully Barca जीते. Like I said, there can be the worst case scenario also. Certainly there will be a lot of exits that will already be starting to get planned, in my opinion. अगर ऐसा कुछ होता है, so who do you think are the main exits from Barcelona come the summer? I feel Gerard Piqué probably will retire. That's the news out there. So he'll probably go. That's one. Ousmane Dembele, obviously. I don't see a future for Memphis Depay. Then I think Martin Braithwaite probably will also be let go, because he's got a hefty pay packet that he's taking home, and that will clear a lot of salary on the books for us. And another player that I think I'm not sure, because there is no news about it. I mean, there are mixed news about it. Is about Sergio Busquets as well. Whether is he planning to call it a day or maybe continue for another season. Dani Alves, obviously. I mean, he's 38. He's signed in for a season. We don't know whether he'll continue for another one or not. So these are the few major exits of some important players that we are having right now that are planned. I mean, if Ousmane Dembele comes from, if he cuts down his wage demands and comes to a reasonable contract and he stays healthy for the rest of the half season and plays well, there is a possibility that Barca may still re-sign him. But that's what these are the exits that I have in mind at the moment. Luke De Jong, given his current form and the way he has sort of fit into Javi's system, I think he would be the last person to be made a decision on, given if we get a backup number 9 or not. If we don't get a backup number 9, he might, anyways, he's on loan. So probably his loan might be made permanent or so at a nominal fee and continued at Barca for maybe another season.
Interesting. By the way, yeah, over 160 people watching. Again, जैसे मैं बोलता हूँ, it's just a press of a button. आप please subscribe करिए. आपके questions definitely हम लाएंगे screen पर as much as we have time for. And yes, please do comment. Please, take the poll or definitely share the stream as well. We are a fan channel for everyone to see. आपको definitely बहुत new watchers है आज hopefully, and we'll have lot of content coming on, not just Barca, चेल्सी, मैन यूनाइटेड. सादिक भाई knows that हम वॉच अलॉन्ग्स भी करेंगे, ट्रिविया सीरीज भी लाएंगे. लॉट ऑफ थिंग्स आर प्लान्ड, historical series as well as previews and reviews that we're talking about. Talking about Luke De Jong and Depay now, again आप बोल सकते हो, Luke De Jong has been far better in terms of what he's producing, और meritocracy tells that वो he deserves a chance in Barca, proper first team, like in the first 11, at least till the time that maybe Aubameyang kind of gets the full kind of form. But what about Depay? Because Depay, you said that he's probably going out. Like, don't you think if in case say tomorrow, say Busquets goes, there might be a situation where Barca को change करनी पड़ेगी अपनी system, where you might want to have that inside forward or basically a number 10, जहाँ पर Depay might be a great fit. Don't you think so? Well, actually, when we got Depay, that was when Ronald Koeman was the coach, and Depay was a Koeman purchase, or a Koeman guy, so to speak, because he had worked with him in the Dutch national team as well, or had scouted him for that as well. So with Memphis Depay and Koeman's approach, Koeman, although he is a cooler, he's a proper cooler. He was our captain. He won us the '92 UCL. So he's a Barca legend as a player, and he comes from that Cruyffian philosophy. But the philosophy that he coaches is not very much based on that. If you look at his days at Everton and his days, I think even at Southampton, he played an attacking brand, but it was a more direct, more pragmatic sort of a approach. So in that system, Memphis Depay fits. But if you talk about Xavi, we sometimes believe that Pep is very rigid in his ways and in his system. In terms of rigidity to the system, Xavi is even a step above. It was always debated amongst me and my friends that Xavi might lose a game 10-0, but won't compromise on his system. And I think so far we have seen that also. He needed the wide players. So until the January windows did not open up, he played Abde, he played Elias. He got those players in from the Barca B team and from the reserve squad. So he's not one to basically compromise on the system. So even if Sergio Busquets goes, he may alter the system a little bit, get in the double pivot option on the system, but the overall system will be the same, where he needs width with his forwards, and he needs the best kind of forward that works in a system is either you have a do-it-all number 9, like a superstar level number 9 who does it all, or you have a proper, I would not call it a false 9 per se, but a playmaking number 9. Like Ferran Torres works like a playmaking number 9. So you need that. With a Memphis Depay who needs to carry the ball for long stretches and not play the link-up play, he doesn't fit as effectively in Xavi's system. At this, from what I see and what I perceive of the system. Yes, he might fit in certain slots, like say, for example, if you have a more direct team playing against you. So, or if you have a really proper low block team where you need to hit them sometimes with just a direct run. So in those situations, he might fit, but I don't see him fitting long-term in that system of Xavi. Well, for Dutch fans, थोड़ा disappointed है सुनकर, लेकिन I think Sadiq bhai is absolutely correct. Probably वही उसका level, honestly speaking, I have not seen him do that well in terms of international tournaments हो गया, या Manchester United हो गया, by Barcelona हो गया. Maybe Lyon was his absolutely right level, where he was the big fish in the small pond kind of thing, where he is giving that free flowing role, like Sadiq bhai said as well. That is something which he wants as an environment on the pitch as well. अगेन यार, मैंने हाईलाइट कर दिया कमेंट, फिर भी आते जा रहा है, तो आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवे ये कमेंट रहा दिलिट. I have actually gone on record saying that I would love him at Chelsea, but again, do Barcelona really need him? Barcelona does need a player like him. He does fit the system very well. He's a good ball playing and a good passing centre back. But then there are two issues that are there, because one thing is that his agent is Mino Raiola. Mm-hmm. Now there is another thing. Maybe it could be a combo deal, and if you're getting Haaland, we are getting De Ligt along with it, and going for a blockbuster 2-player deal with Mino Raiola in the summer, then we don't know about it.
But then again, that would be too expensive. Dealing with Mino Raiola is always not an easy task, as most fans of, especially with Manchester United, we have Paul Pogba sitting in our books. So we have been, we have been learning about that for the last few years now. So, Yeah. but then again, he deals with different clubs in different ways. That's why I always say that if I ever was a player, I would have wanted Mino Raiola to be my agent, because he's lousy for the clubs, but he's excellent for the players. Excellent for exactly. मतलब वो he's probably the best, out there in his job. Like let's be honest, that's his job. लेकिन हाँ, where is AKG? आपने शायद late join किया stream, क्योंकि yes, AKG was here for a good 40-45 minutes. AKG had an assignment to get to quickly, और deadline थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा. लेकिन हाँ, like I said about Vinayak as well, they are welcome always. Like Sadiq bhai as well. Hopefully they will be back very soon. लेकिन हाँ, बहुत insights मिले from AKG and of course Sadiq bhai. Please do check out the stream after this stream gets over. Definitely a lot of very clever insights, especially regarding the Napoli Barca match. Now एक question बार बार आ रहा था, ये था about Rafinha. I think हमने बात की थी in the Manchester United stream yesterday, especially Liverpool Leeds playing. तो Rafinha आपने बोला था यार, if Leeds do not basically stay in the Premier League, then you can definitely see him going. But again, the style that Rafinha plays, I know Leeds also मतलब बहुत encourage करती है in terms of attacking football in general. Having said that, he's more of a ball player. Don't you think so? Considering that, you'd see that maybe a team like Barca or maybe or Chelsea, ought to be, or maybe a Man City, that can be his future in the long term. Yeah, because I was just listening to Divyansh also earlier, his video today, and he said that Rafinha's current price in the market is around 50 million. But if, Wow. say, Leeds gets relegated, it will crash down to, say, 20-25 million, and then a lot of clubs will be in play at that price. So yeah, definitely his play style, obviously with the Brazilian flair, and he's a out and out winger. I mean, a winger, I would say an inverted winger, but he has the element of maintaining width. He's not. I mean, Depay is more of an inside in the channel forward, so that's a different profile. Rafinha is more of a, we could say, how would I say? He would be more of a poor man's right-sided Neymar kind of a profile, if I may say, in Yeah. that mold. Not the same talent, but in that mold of a player. So he can fit into Barca's system. But then I think there are other clubs going for him. Liverpool has a keen eye on him as well, as a long-term successor to probably Salah or Mane or one of the three forwards that they have up front. Yes, absolutely. Again, I don't know if there are any mods. Chelsea perspective, big shout out to you, brother. You're a mod. Let's please not have spamming done in the chat section. It helps me figure out, क्योंकि आप इतने बार अगर मैसेज डालोगे ना, ट्रस्ट नहीं, आपका ही मैसेज मिस हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग भी वो कर रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, मैसेज ऊपर जा रहे हैं और मैं मिस कर रहा हूँ, राइट? तो let's actually have messages come in for sure. लेकिन we will take them one by one. Sadiq bhai, I hope you have time, a few more minutes. Yeah, go on. Perfect. So this is about Frank Casey. I know Busquets का भी question आ रहा था here, लेकिन Frank Casey, we have spoken in the past, Sadiq bhai, but is he not a player who fits like the 4-3-3 where you have box to box people more? Is he that mold of player for you? Yeah, exactly. He's more of a number 8 than than a Busquets player. Or as I said, if you are going for a double pivot system, then in that system, in a pinch, he can fit in. But the more I've seen him at AC Milan, he seems to be, more of a Premier League mold of a midfielder, to be honest. He doesn't seem to fit in that Barca profile as such. Yeah, as in, I would definitely agree there. I was actually बहुत surprised था कि बहुत strongly link हुआ था Frank Kessie के साथ. I can understand maybe an ex-AC Milan coach going there and then probably wanting to get him there. I didn't see the fitment, like as much as I actually like his play really. As in, for AC Milan, I think he is a linchpin. In terms of Rafinha or Anthony, now this is interesting. Anthony has really gone under the radar because of Halle's exploits in a sense. Anthony is someone like, maybe he's more similar to Ziyech, where Rafinha is more like a traditional winger who takes shots. What do you think of that? Well, Anthony is, as I said, this is the similar sort of player. I mean, Rafinha is there. Anthony is more,
I mean, he's more of a link player Yeah, basically. correct. Rafinha is more direct. Direct. They're Exactly. वो just short two plays है sides मतलब of the direct. same coin, so to speak. They're both inverted wingers, but Anthony would like to create more for other players, and Rafinha would like to score the goals himself. Exactly, exactly. I think that's why Anthony doesn't take the plaudits as much as I think वो deserve करता है, to be honest. मतलब Exactly. जब Ziyech actually was out of form, strangely, as in tabloids how they are, right? Anthony is the closest thing. So and he's from Ajax as well. So they were actually thinking that Ziyech can go back to Ajax, Anthony can come there. Like Ajax is like okay, एक मतलब just a charity or what? I don't know. Like what I don't know how sometimes tabloids kind of link us. But in terms of other questions, I think there was a question also about okay, Rafinha is just like Di Maria. Ankit says Di Maria. Yeah, I think a younger Di Maria would have been a closer example. Maybe Abhi Yes. Di Maria is not what Rafinha is, but yeah, I get your point exactly where you're coming from because Argentina के लिए Di Maria was probably that player. जो basically we wanted him to be at as in I'm sure Sadiq bhai wanted him to be at Man United, but I think Man United maybe in a sense he got the raw deal. That's my kind of case. What do you think? What, Di Maria? Yeah, nahi? You did something yesterday. Exactly. I knew that was coming. I knew that was coming. Talking about this, do you think Arao ये extend करेगा? What is your gut feel? No. I think see, he's a La Masia product, and having Joan Laporta there, I have full confidence in Laporta's abilities to find out a contract and a deal with him. I think his contract is not up this summer, anyways. I think he still has a year on his contract, so he just needs to Mhm. be extended. So I think over the summer he will work something out with him. Yeah. अरे यार insane football talk ये क्या है यार Çalhanoğlu is a totally different player. I don't know if there's a pun intended here. If you understand the pun, सादिक भाई आप बोलिए. Çalhanoğlu is totally Yeah, different. लेकिन or maybe maybe talking about this exactly. Milan ना Yeah. maybe one of those. I think I get what you mean, Jatin bhai. Big ups to you. Now और आते हैं तो let's sum it up in terms of basically Barca. I know हम बात किए Napoli Barca. We'll come to the predictions as well, people. लेकिन talking about the future of Barcelona, आपको लगता है from what I understand, Sadiq bhai, you are definitely wanting एक midfielder who can basically be a cover for Busquets. That is one of the areas. Fullback तो for sure because Dani Alves is not your future. Dest is not cutting जैसे AKG ने बोला था. At least for now. Next season देखा जाएगा. Left back also Jordi Alba is not ideal. तो Aspilicueta reports say that Chelsea are still trying कि वो sign करे extension. लेकिन Aspilicueta has Barcelona in his mind. Seeing again Aspilicueta yesterday itself, you saw it. He did very well for half an hour. Then Renato Sanchez overrun him big time when he moved to the other wing. Well, So, what do you think? the thing with Aspi is, the role that I'm envisioning him playing at Barca is different than what he's playing in at Chelsea. Because at Chelsea, he sometimes plays right back, sometimes plays right wing back, sometimes plays centre back. But knowing Aspilicueta so well over the years, his best trait is when he plays a defensive right wide area role. Like when he defends in space, when he, I mean, his lateral movement is excellent. He doesn't has a north south speed anymore, but his lateral movement in defensive phases is amazing. And if he's asked to patrol that right center wide area, that is his ideal role to play. So what I envision Aspi doing is, as I mentioned, that three center backs. On the left, you can have Ronald Araujo, and on the right, you can have Aspilicueta covering that space, and in between, you can have Eric Garcia as the ball playing center back who sits really deep. So then you cover your bases with Aspilicueta for at least another couple of years in that role. I don't envision him. When you start, yes, you will have a left back and you will have Aspi slotted in on the score sheet as a right back, but technically he won't play the right back. He'll play a rightish center back kind of a role. Okay, got it. Actually, Aspilicueta, having said that, I'll put something left field altogether. Jose Mourinho had tried it एक season में in the Champions League. He played a couple of games as a midfielder, as a second kind of cover for the fullback. He won't be a bad option there क्योंकि वो actually he can play football.
trust me, this guy is underrated, very, very highly underrated, like, in terms of how he can play. So, like you mentioned about Danny Alves, being that player who kind of, bombs on, and so a right centre back who kind of, moves on to the midfield. So I think it's a great point by Sadiq Bhai. And I can see that happening, and Barca actually plays that way. That is something that they envisage, going Because forward in then the what you journey. can do is you can involve Aspilicueta and Frankie de Jong side by side. Mm-hmm. And Wow. because Frankie also has those centre back traits, but he's on the left side, and Aspi has those traits on the right. So depending on which flank you are building your offense from, you can transition your defense accordingly. Because if you see this Javi system, and if you go back and see a couple of tactical videos on the Cruyffian 3-4-3, it is Mm-hmm. it is a very fluid system. So you need football players. You need football players with a decent IQ to play in this system. Or True, you true. need people who follow an instruction. Like, say, Adama Traore. We all doubt Mm-hmm. his overall footballing IQ in all of our conversations, but he is one guy. If you give him the instruction to hold the width, he will hold the width on his flank. Yeah, I think that's a great point as well. लेकिन हाँ, ये कमेंट आते हैं यार, सर्जियो रोबर्टो बेसिकली चाहते थे कि वो एक रीस जेम्स या एस्पिलिक्वेटा हो जाए. अनफॉर्चुनेटली वैसे रहा नहीं उनका. Obviously injury plague भी है. You cannot say all together him. लेकिन हाँ, I don't see. I think we've spoken enough on recent streams about Sergio Roberto. I don't think he has a future. It's time for him to go. And हमने शुरू भी किया था आज के स्ट्रीम उससे ही. सादिक भाई, your favorite Italian player? Paolo Maldini. Oh, interesting. Although an Inter sort of, I would like Inter to be more winning than Milan, but Maldini was different different. grade altogether. But he Him, I missed out on another one. I would have loved to have seen him, but I saw him only in his last season, and that was way early in my days of following football. That was the last season of Franco Baresi. फ्रांको बरेसी. ओके, मैंने नहीं देखा. माल्डिनी को तो काफी देखा मैंने, honestly. And yes, you're right. मतलब someone who could slot in at centre back, left back, मतलब or that leadership that he respected, he commands respect, no? वो that kind of player. And Aspilicueta, maybe 50% of Maldini is in terms of just that player as an There aura. was a stretch, like I started following football in '96, and I really found out about the Italian league by '97, '98 when I really started following football properly. So Inter Milan, obviously because of Ronaldo, was my club to support at that time, and I knew that AC Milan is the rival, so I did not like them. But just watching Maldini, he, as you mentioned, he commanded respect. ये देखिए निखिल, मतलब I swear you have audacity, my friend. Sar and Ronaldo Araujo swap. Trust me, I wouldn't mind. लेकिन Sar has been very good, by the way. And no But disrespect come to on, Sar. Ankit bhai, you will also agree. There are मैंने levels इसलिए to बोला it. ना पहले audacity था उसको. निखिल, hats off to you. I know Nikhil. I think Nikhil, even you're a Bangalorean if I'm not wrong. वो थोड़ा है. It's about the banter, sometimes with us. But yeah, Pedri or Phil Foden? Interesting question. Pedri. Really? Wow. I'm a huge fan of Phil Foden and what he's turning into. In fact, a while back, I was even saying that, because I saw the young 20, 21-year-old Ronaldinho, the PSG Ronaldinho. Phil Foden gives you those vibes, but I don't think he's. I know if he continues under Pep's tutelage, he will become mentally also strong enough. But I feel he has a little loose up there, a little bit. He sometimes gives you those vibes. मतलब off-field issues, unfortunately, है. That's a fact. Exactly. And but with Pedri, it's difficult comparing the two. Because one is a left winger. As I said, one gives me Ronaldinho vibes, the other gives me Javi vibes. So you can understand the difference in the play style. But they're both excellent players. Exactly. I think Isaac was linked, if I'm not wrong, to multiple clubs. Lekin, I don't know, for some strange reason, why do you think he's not moving? Is it the fee, or what do you think? I think clubs are still not sure about whether his current skill level or his exact ceiling as to what they're buying. Yeah, even his strength, right? Body strength, do you think body strength is something that he needs to build on?
I think he has to, but then I think clubs are also worried that maybe he is a system player rather than a player who can fit into any system, kind of a thing. Your system Right. needs to be a very fluid, moving system, or it needs to be a very direct kind of a through ball system. And if you go to a direct team in the Premier League, then obviously you need to be a little bit strong as well, because you will be fighting those tall centre backs of the Premier League. So that's an issue. And again, the price that being quoted is, I think, 70 plus for him by Sociedad at the moment. Yeah, मतलब मुझे That थोड़ा सा डाउट हुआ था जब Dortmund did not, as in fight for him to kind of, get him back to Dortmund and play, and they got Malen. That itself was a given. Like if Dortmund really wanted, let's be honest, they would have got him. लेकिन वही है कि they did not, because Haaland का पता he is not a long term guy and maybe they are not invested so much on him. International tournaments काफी बार क्या होता है, it's a tournament after all. It's basically 8 or 10 matches, sometimes 6 matches आप बहुत ज्यादा देखते हो because आप माइक्रोस्कोप के अंदर हो. But league sometimes tells you what is basically the person's ability in terms of physical strength week after week. तो to some extent I feel अभी भी डेवलपमेंट है. ये तो गावी आंसर होना चाहिए. I think that should be easy. Yeah, Kamavinga potential, yes, but seeing the season that the two are having, it's a Yeah. and again, as I said, again different profile of players. So not a fair comparison here. एग्जैक्टली यार, कंपैरिजन में तो पूरे रात हम चलते रहेंगे, बट आई थिंक ये बुस्केट्स का क्या बोलते हो सादिक भाई, और यार तो ये हमने कवर किया है ऑलरेडी. जतिन भाई आप प्लीज देखिए, वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट मिडफील्ड, अबाउट बारसा मिडफील्ड स्पेशली अगेंस्ट नापोली जो होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर भी बारसा का. एंड यस, फरास्तली सेज गावी इज 8, कामाविंगा 6, नो कंपैरिजन. एक्चुअली कामाविंगा कैन प्ले मल्टीपल पोजीशन. मैंने देखा है लीग में उन्होंने किया है अगेंस्ट चेल्सी. वी प्लेड देम, आई थिंक Mason Mount fortunately had him in his pocket. Again, no comparison because Camavinga was still learning the trade at that time. Now that in Real Madrid, hopefully he'll find his right position, and that's what he's there for under Ancelotti. Like he's that guy, perfect guy for him. A senior person is what he wanted to, give him a chance. But yes, Michael says why not give Dest a chance? I can't understand, but Aspi can't play at centre back alongside Araujo. That's what you mentioned, Michael. Like they definitely need a full back. If they are not giving Dest a chance, like that is a big if. Like AKG and I think Sadiba also agreed. Dest unless वो left back में convert होता है, I don't see him as a right back as a starter for Barcelona. Even the beginning of next season, like that is something unless वो बहुत ही कुछ करता है next कुछ महीनों में, that will be a different thing, Michael. But correct me if I'm wrong, Sadiq bhai. I think the best case would be for you guys to actually go for a replacement for each position rather than try to fit one person for both positions. Right? I think, see, Dest is still only 20. He's very young. So, as I said, if he develops his defensive traits in the rest of the season, definitely he can be a very good component in the future. Because, as I mentioned, when he defends on the left side of the wing, he looks very competent. His track back abilities and everything are very good. Right side, yes, he still has the same pace, but his positional awareness is pretty limited on the right side when he defends. But again, because as I said, your fullbacks have to be very fluid in this system that Javi plays. If you're building from the left, your fullback needs to go up, and the other fullback needs to be in the defensive position. So if you are playing Dest on the left and we're building from the left, then Dest becomes a liability on the left wing attackingly. And similarly, if you play him on the right, he's very good. In the last game, he gave us some really good offensive. He gave us some significant offensive output on the right side. But then again, when they were tracking back and Valencia's wingers, Brian Hill, a couple of times, he tracked back wonderfully. He had Brian Gill like in front of him, but Brian Gill was turning him around a few times really badly. Right. So talking about centre backs, दो तीन questions है. I think one is Botman, who's been linked to many clubs. Surprisingly, again, he hasn't moved. I was really expecting him कि वो move होगा January में. If Newcastle survives, he's going to Newcastle for sure. Yeah, if he survives, because I think almost हो चुका था. I think just the fee was an issue, if I'm not wrong. Yeah. So I think. No, actually, the fee, and plus he did not want to go at this stage because Lille was still playing in Europe, and Correct. so although he had agreed with the terms, and then Lille was also trying to sniff out the extra 10-15 million from Newcastle. So Newcastle said enough is enough. We'll negotiate with you in the summer then.
Yeah, absolutely. इसकी बात हम कल ही किए थे. I remember. I think on जीशान भाई के स्ट्रीम में भी मुझसे पूछा गया था. मैं तो बोला यार चेल्सी please go and buy him. I'm sure Barcelona would want him. Anyone would take him. He लेकिन is he'll even Real Madrid is in. Real Madrid. I mean, आज there are strong links Bayern coming in Munich. with Bayern Munich से strong links है आज. Every day some of because the other name. see, he fits in the system. I mean, he's such a versatile player in the midfield that he could be the ideal. I mean, people may not agree. He's a more physical player than Luka Modric, but he may become a very good replacement for Luka Modric in the future because he is 19. Freddy Valverde is like I think 23 if I'm not mistaken, and Kamavinga is I think 18 only this season. Yeah, So yeah. if you play this, if you play the KCM trio for another season, by 2 seasons time you could have your future midfield trio ready. That's a very interesting point. And यहाँ पर एक prediction मैंने predictions किए. By the way, people out there जो नहीं चेक किए प्लीज चेक कर लीजिए. चेल्सी एंड यूवेंटस के गेम्स का मैंने रिव्यू किया है. उसका पहले 2 मिनट एटलीस्ट देख लीजिए. जस्ट चेक आउट मेरे predictions लिटरली बैंग ऑन आए हैं. Talking about predictions, अब आप बोलिए सादिक भाई. Hopefully you get it right this time about UCL and Barca. Well, knowing the previous history, the last time we were in a similar situation that was 2003. We started building in 2004, 5, 6. By 2006 we had the Champions League, but that was because we had a player of the caliber of Ronaldinho coming in. So, say if we don't get a Haaland, I would add say another 3 years to that because I am of the belief that Gavi and Pedri in the future will become really big players. Yeah, So agreed. I see 5 to 6 years. I'll be very practical here. 5 to 6 years. Yeah, considering आज के दिन में जो competition compared to what it was in 2004-5, I can agree there. वहाँ भी I think it was Rijkaard who kind of got that revival. Strangely, a Yes. great player, and for some strange reason people don't remember him. I think this guy deserved a lot of credit. Rijkaard, lot of Rijkaard was off-field. good. People talk about Ruud Gullit and Marco van Basten, but Rijkaard was a linchpin of that team. He played the central mid role that we are talking about Busquets and all those people. Rijkaard was of that ilk. Correct. Now, yes, Michael, we've agreed on this. Like, Sergio Roberto definitely needs to move on for sure. When will Silva retire? If you're talking about Thiago Silva, come on. मैंने उस वीडियो में वापस कवर की है. Never is the answer. 2023. Yeah, After he wins that World Cup. Yeah, well, let's see. I know Brazilian fan in the house, so आप बोल भी सकते हो. लेकिन हाँ, probably deserves it. Honestly, again, talking about players जो नहीं इतने celebrate किए जाते, I know a lot of us do. लेकिन Thiago Silva, for some strange reason, he's not spoken about in the highest elite, centre backs ever. Maybe because of that World Cup not missing and things like that. Hopefully he'll I get think there. people who still doubt Thiago Silva should just go and check out the 2014 World Cup semi-final. People say Neymar missed it. I feel the bigger miss was Thiago Silva in that Thiago game. Silva, exactly. David Luiz was everywhere. He was all over he was confused without Thiago Silva. True. Exactly. Okay, the best Italian players, Del Piero and Pirlo. Nice choices, definitely. बहुत ले Italian legends हुए, definitely. Man City, यार अगर ये हो जाता है ना, फुटबॉल बंद कर दो, अपने घर जाओ. But at the same time, Pep Guardiola and tall strikers, I'm not pretty sure as well. Again, it might be something. No, if this happens, because Haaland does not remind me of Ibra. Haaland actually reminds the way he plays and the way he bullies people. Like I've seen him go on runs which are very reminiscent of Ronaldo R9. Okay. Because people right now are quoting. I mean, honestly, people are right now quoting the stats of Haaland. That he has some 75 odd goals in some 78 games. I mean, okay, I may be a goal off here and there, but if you go back and look at the stats of Ronaldo R9 playing in a much more physical era in the mid 90s when a lot of fouling and things were allowed, there was no VAR to help you and things like that. The guy had similar stats. He scored almost 40 plus goals in some 40 odd games for Barca. And at PSV at a time when Ajax was the 1994 dominant Ajax with Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert. That Ajax he dominated with a PSV squad, which was not as good at that time.
So he reminds me of him. Exactly. So, by the way, people, again, close to 200 people watching. First of all, thank you for watching. And of course, Sadiq bhai in the house. आपको बहुत ही बढ़िया लग रहा है. अगर लग रहा है तो यार लाइक तो करिए स्ट्रीम को, पोल भी लीजिए, लेकिन यार सब्सक्राइब कर दीजिए. इट्स जस्ट बेसिकली प्रेस ऑफ अ बटन. We are literally 15 away from 1500. So let's get us there and beyond. Certainly, it's with you people as well that we kind of would do more streams, and आपकी involvement is something that we would love. So yeah, please do involve yourself because it's a fan channel for everyone to see, and without you, there's no fun as well. So yeah, do join the family, and we would definitely do a lot more streams like this and many more. We are planning on a lot of other stuff as well. So stay tuned for that. But yeah, definitely subscribe. Like in Acha, Ankit bhai, I have one Chelsea related question for you, which I've yeah, been yeah. thinking for the last couple of days, especially with all the Lukaku and everything going on. I think why do Chelsea always go for that big? I mean, they're always looking for that next Drogba. Yeah. If I see, like, you need that big burly striker, but I think a lot of Chelsea fans tend to forget that Drogba's biggest trait was not just his physicality; he was a very technical and very swift forward as well. Absolutely, मतलब you are 100% bang on. क्योंकि you know what, Lampard, Drogba के इतने क्यों है combination? Kane and Son have equaled it. People forget it's not just Lampard providing to Drogba, boss. It was Drogba providing to Lampard. इतने बार Drogba has moved to the wings, or trust me, if at all Drogba was a winger, he would have still been very very popular. Trust me, that is the kind of forward he was. And like you said about Haaland, I actually see Haaland as closest to Drogba. Because he, along with Sancho, Probably. आपने Bundesliga में देखा है, the two kind of interchange spaces lots, or that is what Lampard. I know he was a central midfielder, and even Lampard, बहुत लोग बोलते हैं he was a second striker, someone who went in the box. नहीं, he was a proper central midfielder. It is just that he happened to go there and he had a tackle in him, very good one in that. No pun intended. Scholes was a better ball player, लेकिन Lampard had a better tackle, in terms of just the tackling. So that is something that आप बोलोगे. In terms of Drogba, यार मैं बोलता हूँ, you can say some extent कि there is some pressure from the board. एक होता है, we have invested in so many strikers, Sadiq bhai, be it big name players or even not so big name players. जैसे Dembaba, he did very well, लेकिन he didn't go to that level probably what Rafa Benitez at the time anticipated. So those are particular case studies जो चेल्सी ने लिया है कि यार we make signings, Morata हो गया, इतने हो गए. Neither has kind of worked to that level. What has probably worked for them is someone who's of that build, someone who's basically able to hold the ball well. So I think more than the big name, it's basically that kind of mold of striker. That is where हमने बात की थी Tyrone के साथ last stream में about Chelsea, and Michael talked football. He was there as well. That we missed out on Vlahovic big time, because Vlahovic was that player who brought everything. He's someone who can basically score. He can basically move, has movement, as well as basically has that body strength, that heading ability. That is what Chelsea want, because that has worked for us. You can say that Anelka worked greatly for us as well in the past, but Anelka never played as a proper center forward. When he used to play with Drogba, he was the one who used to drift wide. He used to run the channels. So Yeah. that was the difference. Same with the Kalu. So they were more like supporting Drogba, but Anelka, because he was a natural goal scorer, he happened to score many goals because his tendency was to get inside the box. Maybe मतलब मैं तो ऐसा चाहूंगा Chelsea should go for that. You're right. People who are not those big name players but are able to bring something different. Maybe Havertz, Abhi, what he's got, if he's getting that consistency, will make Chelsea think that going forward, that will be the mold that we'll go for. Just go for the big names or people who have that build. Go for people who can play football irrespective of whatever position. क्योंकि आज false nine का ज़माना आ गया है. Football is changing. It's no longer that Jose Mourinho football. That's not going to work at a consistent level. It can be an option from the bench. Like Giroud worked very well for us. Why? Because he was an option from the bench. I don't think he was a starter week in week out for us. So I think that's what I would say. I don't know if any Chelsea fans agree with that. And yes, for this we will have to do a different stream. Trust me, boss. ये question तो बहुत ही बड़ा question है. हम करेंगे एक ही चीज से भी डील हुआ है. We'll do a stream actually with Barca Ultras about the Barca 11 maybe of the last decade. Chelsea का भी गुरुजी के साथ करना है. वही बात हो चुकी है. मतलब we'll definitely have that with Baba and Guruji, right? एंटोनी इज अ परफेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर डेम्बेले. डेम्बेले को रिप्लेसमेंट चाहिए क्यों यार, वहीं रहिए क्योंकि बाकी लोग लेने नहीं वाले आपको. तो बार्सा में बनाइए. मैं तो Chelsea बोलूंगा नहीं ले रहे Dembele को in the summer. मतलब
I still think there's an issue with the salary. I don't think Chelsea is going to pay that much, and Dembele will No, not they won't. come down क्योंकि उसका अभी फॉर्म वापस से ऊपर आ गया तो I don't think he is going to come down. Like he has a say now. उसको मिलेंगे और potential buyers. So why not he stay there? And बारसा के साथ I think things could be fixed if he, in case he changes things in the next couple of months. Who knows? I think a lot of Uh, football players these days are doing what American sports players. I mean, there is only free agency and trades that happens. I think a lot of players are going towards there, and even if you see, Paul Pogba is also having a resurgence, so to speak, again in his contract year. Like there's a very famous term there in American sports. They call them the contract year players because they perform really well in the final year of the contract, and then they get a big fat contract from some other team, and then they just sit on it. Yes, yes. I think that's a great analogy from Sadiq bhai. And Lotaro तो 2 महीने से गोल नहीं स्कोर किया. I think Michael Talk Football gave me a stat that he's not scored from December 23rd. तो Ani Lotaro actually, he only works very well in a two-striker system. two striker. I think get him to Chelsea. Probably Lukaku might just start firing then. No, he said no, you stay there, I'll come there. याद है वो यार वो तो यार I cannot be changed. That cannot be changed. Lukaku is very interested. Let's be honest. लेकिन हाँ उसको अभी अपना इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा जो भी है. फेवरेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट यू विटनेस लाइव कौन सा बोलोगे 2006 2002. जिडान 2002 आपके लिए 98. हाँ 98. I even saw 98 the full tournament. हाँ इवन मैं 98 से शुरू किया था एक्चुअली मैं 98 वर्ल्ड कप से शुरू किया था ऑनेस्टली 98 वर्ल्ड कप और 2002 इसलिए क्लोज है क्योंकि एशिया में था इन अ सेंस दैट वाज काइंड ऑफ मच बहुत ज्यादा कवरेज हुआ था इन एशिया दैट वाज वन ऑफ द रीजन फॉर मी लेकिन 98 हाँ जिडान बर्स्ट आउट टू द सीन दैट वाज अ डिफरेंट कैटल ऑफ फिश विद रोनाल्डो इन हिज प्राइम I mean, Ronaldo I was so disappointed on that final night. I mean, I was just sitting late night. Next day there was school to attend, and I was just actually, yeah, it was like the final couple of days of school before the summer vacation. I was like, I was hoping for something to happen in that game, and then Zidane happened in that game. But then 2002 was my favorite one. Yeah. By the way, ये Verissimo जो है, he is not a relative of the manager, just so you know, people बेनफिका का जो है, लेकिन इंटरेस्टिंग शाउट बेनफिका का देखते हैं मतलब क्या होता है. अगेन मैच है आज. बाय द वे पीपल जो मिस किए थे कल का स्ट्रीम चेक करिए. सादिक भाई उसमें भी थे. बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम हुआ था. मैनचेस्टर यूनाइटेड अल्ट्रा स्टे इन द हाउस. डू चेक आउट दैट अगर आपके पास टाइम है बिफोर द मैच. दैट वाज ग्रेट डिस्कशन इटसेल्फ. यस हमने ऑलरेडी यूसीएल की बात कर ली है. सो आई थिंक again lot of people joined. हम बात करेंगे. I think we can go on and on Sadiq bhai. Almost like 1.5 घंटे हो गए we've been speaking and we'll get ready for the match. I'm pretty sure Sadiq bhai is also looking forward to the Manchester United match. Sadiq bhai, let's end on actually हमने बाकी मैचेस के बारे में तो बात ही नहीं किया यार. यूरोपा में what is the match that you're looking forward to apart from the Barca match? I'm interested in the Atalanta match. Interesting. I mean, who are they playing exactly? Atalanta is leading 2-1. एक्चुअली देख लेते हैं यहाँ पर. देख तो लो. एटलांटा ओलंपियाकोस राइट. तो हाँ Yeah, they are they're leading leading 2-1. 2-1. They're leading 2-1. That's going to be an interesting one. And I'm also interested in seeing the journey of Sheriff. They're Sheriff is a leading story, yeah. 2-0, and they gave a very good account of themselves in the Champions League. I mean, you beat Real Madrid at the Bernabeu, which is an amazing feat. I mean, Barcelona has not been able to do that in the last 2 years now, more than 2 years. Yeah, definitely. For me, like strangely, that game जो Betis वाला हुआ था ना, that was interesting. Like Zenit वाला, because Zenit we played them. Again, people Chelsea fans especially आपको याद रहेगा. मलंग सर की बात हुई थी. मलंग सर उस गेम में मिसिंग थे for a change. But yeah, Zenit they have it in them. I know they've lost their striker if I'm not wrong. लेकिन still I think Zenit is not an easy team to play against. I think Leipzig. I'm looking forward to it. बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं. Leipzig they really kind of are good on the eye. Nkunku is one of my go-to players. Season they've been pretty awkward because they changed to Jesse Marsch, and Jesse Marsch just was totally onto the offensive side of the Rangnick ball, but defensively he was he was found wanting as a manager on the defensive side. So I don't know. I mean, this season has been completely a massive disappointment from them. Absolutely.
यार भाई ईडन हजार्ड, यार इसकी इसकी बात कर लेते हैं। क्या लगता है सादिक भाई, व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर ईडन हजार्ड? लाइक शुड चेल्सी रियली टेक द बेट? I mean, if he's coming for a decent price, why not? Why not? सुपर There is सब। no harm in. I mean, as Baba said yesterday, there's no harm in taking a punt on him. He's a Chelsea legend. Stamford Bridge is like, sometimes familiar surroundings can work amazingly well for a player. Correct, correct. Matlab, again, like, see, that is the thing now. When you have options like, if in case Dybala becomes available, I'm just kind of putting it out there. If in case Dembele becomes available, who are younger, who अभी भी है ना, है उनका मतलब ceiling is going to be higher. So that is something that I think, as knowing Chelsea, they might go for it. क्योंकि ड्रॉगबा का थोड़ा अलग था, situation that he was really in his, twilight of his career, where he actually needed that, space, and we needed a leader in the dressing room in the 2014-15 season, with Mourinho wanting to replace Samuel Eto'o. So that was different. But Hazard, if he's ready to play that role, like I said as well, like with Baba, like I don't mind taking him. लेकिन वही है कि it shouldn't be an issue with the team, because knowing Hazard, maybe कल को अगर अच्छा form हो जाए, he'll start expecting to start, which is not good for the team at this point in time, unfortunately. Yes, so But we have discussed a lot, लेकिन we'll probably end on this quickly. What do you think, Sadiq bhai? but Ankit bhai, Uh, just a question on Hazard yeah, yeah. from my side. hmm If Hazard actually picks up form and becomes good, what's the harm in Chelsea playing him then? Oh yeah, of course. But like in the way that Chelsea has built over the last, say, 12 months over Tuchel, आप देखो, we don't have a best 11. We don't know our best 11. Tuchel doesn't know his best 11. And that is something that has worked in our favor. A lot of media says, especially Sky, no, no kind of pun intended, but that's a fact. We are targeted saying that, hey, we are having an issue with the forward line. But that has worked even when it comes to the opposition. They don't know how we are going to line up. We don't know as Chelsea fans how we are going to line up. So that floating system has worked. So Hazard, will he be open to be a rotational forward? That's what my see. Lukaku का क्यों issue आया? Lukaku I think he expected. should be now because he's not even part of the rotation at Madrid right now. Yeah. So if he's actually interested in playing, Mhm. even a little bit, and still maintaining a spot for the Belgian team for the World Cup coming up, I think he should be ready for it. Yeah, that's a great point. But वही है ना, like knowing Hazard, like he's that kind of thing. उसको चाबी चाहिए. जब भी उसको चाबी मिलती है ना, then he'll be like, okay, he's all set, he's all motivated. He's that kind of player. Some people need that. They need basically someone backside. तो I feel that उसका अभी भी time आएगा, लेकिन I really personally feel that, yeah, as a person of nostalgia, I would take him. लेकिन I think for him the best case scenario would be just to say for a Europa League team, someone who's playing in that level, who's able to give him that minutes, और जहाँ पर उसको टाइम भी मिले, उसको मौका भी मिले, where they play football. But yeah, talking about football tonight, we have Champions League football. Again, coming back to Manchester United, हम predictions किए थे, but I don't know if there's yet any news. Maybe anyone has any inside news about team. लेकिन सादिक भाई, what's your gut about tonight's matches? I'm weirdly not worried for tonight. That's strange Okay, that's nice. for a United match. I mean, it's that kind of a feeling. And when I have that kind of a feeling, either it's it's a blockbuster either ways. It Exactly. could. If it will go well, it will go really well, and if it will go bad, it could be a disaster. So it's like one of those feelings. Like you have that nervous though. You have those nervy jitters before the game. Today, for some reason, True. I'm not having those. So like mind is in this state. I'm ready. Okay, either it will be a disastrous loss or it will be an spectacular win. Wow, interesting. Or Ajax, like let's hope for the goal fest. What do you think? That must वो वाला तो है potential. Ajax, Benfica, right? So that's going to be a good one. So finally, prediction time आ गया है. Europa League, Napoli, Barca. 1-1 first leg. Will it be a repeat of the Champions League in 2019-20? I think 3-1 हुआ था, although that was basically at Camp Nou. What do you think? What will be the result tomorrow? I think if Insigne is missing and they're missing their midfielder, I always Anguissa, I think, right? That's how you pronounce his name. Zambo Anguissa, yeah, correct. Yeah, I think if you're missing Anguissa and you're missing Insigne, I can see Barca going for a comfortable 3-0.
Oh, that's confident. Anyone in the chat? क्या है आपकी predictions? Napoli, Barca, और of course आज के matches के भी. If you missed last night's stream, definitely do predict. हमारी But prediction just a being little caveat there. yeah. We are still not aware how much Javi will rotate the squad. See, that is what I was saying. मेरा gut feeling बोल रहा है कि he will. We spoke about Nico. We spoke about Mingueza, Dest. Despite Jordi Alba kind of doing what he did in terms of getting a booking, I can see Jordi Alba getting easily beaten. क्योंकि यार Elmas ने, trust me, let's be honest, without any pun, उसने धूल चटाया था Jordi Alba को. True. I mean, So Jordi that Alba, is from a defensive point of view, is like vulnerable against any attacker in the world at the moment. correct. We have to Okay, be but mindful of that fact. राइट. मैंने एक पोल भी लिया था. पोल में काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आए हैं. अगेन नो सरप्राइजेस देयर, लेकिन काफी लोग यहाँ पर अच्छा टू नेपोली. चलो एक नेपोली के लिए भी आएगा. यस, मैराडोना. ऑफ कोर्स यार, मैराडोना डाबी. नेपोली ऑफ कोर्स फील स्ट्रॉन्गर अबाउट हिम, लेट्स बी ऑनेस्ट. सो यू नेवर नो. एंड नेपोली लास्ट 6 सीजन में 3 बार नॉकआउट हो चुकी है इस स्टेज में. So that will be certainly something that I'm pretty sure they would like to change. They probably have the squad for now. लेकिन overwhelming poll का result आया है that Barca will win, and Barca will probably win the Europa League as well. Among the 4 teams that are mainly in question, I think among I think the last Dortmund. game, apart from the scoreline, was a fairly dominant performance. I mean, I don't know how Osimhen will turn out in this fixture, but if you see the last fixture, Osimhen was kept rather quiet, given the fanfare that he had come in with. Barcelona had managed to keep him pretty quiet the whole game. Correct. तो Zielinski and mainly Elmas who were doing the work, if at all, right? मतलब उनके आगे बॉल नहीं जा रहा था. But that is what Barca in that game midfield में, I think they were pretty good. And again, Sergio Busquets को shout out जाना चाहिए उसके लिए, which probably does not go enough, See, despite the what he best thing lost. is, if you don't talk about Busquets, that means he has done his job. Absolutely. Goalkeepers and CDMs, that's what they are for. Unfortunately, that is what the family is all about. Yes, of course. Torgan, I genuinely feel he should play against Rangers. By the way, Rangers it'll be interesting if they start with Ramsey, because Ramsey came off the bench in that first leg. So Aaron Ramsey, without him, यार 4-2 से जीत गई है. तो I would be certainly looking interesting. forward if they start Amad Diallo or not. Oh yeah, Amad Diallo, that's also a good prospect. Amad Diallo also went on loan to Rangers, no? Is he registered though? आया था क्या? बेंच पर था last time. बेंच पर था, right? He was on the bench. bench पर था. Right. Because he's not cup tied, na. He played in the Champions League, and this is Champions the League. Europa League. So Correct. Wow. You can have one player who does that. Exactly. So anyway, anyways, yes. Rangers also, there is the strong Barca connection there from the 2004 squad. Oh, okay. Van Bronckhorst, the coach. Very, very good connection. That yes, of course. Yeah, मतलब it's that's interesting. Let's see if you get Rangers in the next round then. बहुत ही interesting रहेगा. But certainly बहुत ही मजा है सादिक भाई. Firstly, thanks everyone जो भी देख रहे हैं. I know बहुत टाइम हो गया है. आप लोग चाहेंगे कि हम कंटिन्यू करें. हमारा भी मन है. मुझे खुद को एक स्ट्रीम में जाना है और मैंने कुछ खाया नहीं है. सादिक भाई को बहुत भूखा रखा है, आई थिंक लास्ट 1.5 घंटों से. लेकिन सादिक भाई, अगेन थैंक्स. आप नेक्स्ट कब अवेलेबल हो, we'll probably touch base offline and we'll have a proper stream. Hopefully AKG के साथ वही करेंगे, बारसा वाला, if बारसा की स्ट्रीम हो. और मैन यूनाइटेड का आई थिंक उत्कर्ष भाई के साथ करना. आई थिंक बाबा ने बोला था ना, उत्कर्ष भाई would be ideal, because अचिंत, उत्कर्ष और आपके साथ, क्योंकि यार आर्सेनल, मैन यूनाइटेड और बारसा, क्या बोलते हो, और चेल्सी में हो गया. चलो हाँ करते हैं. तो ये करते अपना एक इमेजिनरी 11. If there is one club I can't tolerate, that is Arsenal. I mean, my apologies to all Arsenal fans, but Arsenal बर्दाश्त नहीं होता. मेरे मन में भी है 1-2 क्लब, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा अभी, लेकिन everyone has it. Let's be honest. लेकिन हाँ, मतलब again it's more about banter, nothing against anyone. We all love football. Like I say, it's a fan channel for everyone to see. And again, do subscribe अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन दबाइए प्लीज, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन दबा के आपको पता रहेगा whenever we are live, and we do almost daily videos as well. तो आप देखिए, और we are always open to feedback. Hopefully we'll have Sadiq bhai very soon, and
let's see if we are doing a Champions League review, Sadiq bhai. I'll let you know. Even if not, like, we'll definitely connect. Until next time, everyone, do take care. And again, thanks for joining. We'll see you soon. By the way, soon ki baat hai, I think we'll probably do a stream on Friday. So Friday night, do join us. ये होगा 10:30 बजे Friday Indian Standard Time. It is basically weekend का Premier League का preview plus the big Carabao Cup final. So stay tuned for that one. Hopefully we'll have very good panelists again. Probably I'll try to get some Liverpool and Chelsea panelists for that one. So yeah, certainly looking forward to it. So do take care, everyone. Thank you again. Okay.